यहाँ पे स्क्रीन पे हमें अपनी फोटो भी नहीं दिख रही है। ओके बोलते हो सर दूसरा बार So hi everyone. First of all, I would like to welcome you all to this session. My name is Akshay Arora and here we are with us. Hello, myself Dr. Sheikh Sarfraz from Infinite Learn by Sri Chaitanya, the chemistry faculty. So dear students, today we are going to discuss the shift to paper. Okay. So 4th April 2025 sir आज का दिन सेकेंड शिफ्ट। अभी तक हम सर ये 6th शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ में। यस एंड येस्टरडे वी गॉट द रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए बिकॉज द सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस बीन आस्क्ड। यस यस So all those students whose paper is yet to be attempted, जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज जाने वाला है because we will be discussing the memory based questions asked in the shift 2 of the 4th April. Yes. अभी तक जितने भी हमने questions discuss किए हैं सर, and sir, as you said that many questions which we are discussing, obviously which came in your mains examination, some models are getting repeated in the coming up examination. Absolutely. That means if you listen, those who are going to write the examination in coming up days, if you listen to this paper, at least may not be many, but at least you can say 7-8 questions, sir. Absolutely. 7-8 questions are of same model and are useful to you, and you're going to get an idea how your paper is going to come. One of the student Atul is saying, sir, any idea for 8th shift 2? बच्चे don't worry, 8th shift 2 में अगर पेपर है तो आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जितने भी, क्योंकि आपका लास्ट शिफ्ट है, जितने भी अभी तक पेपर्स होंगे जेईई मेंस के 8 तक, तो आपको सबका एक्सपीरियंस मिलेगा, सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड, आप उनको प्रैक्टिस करके जाइएगा एंड नॉट ओनली दोस क्वेश्चंस बट द क्वेश्चंस अराउंडिंग दोस कांसेप्ट्स यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू विल बी एबल टू डेफिनेटली एबल टू and shift 8 sir, and shift 8 paper is not going to come hard, that I can assure. From chemistry point of view, I can assure that let it be any shift, paper is not going to come hard. Standard, moderate to standard chemistry will be there. All the shifts chemistry paper was moderate to difficult. No, not difficult, moderate to standard. इस बार सर बच्चों से रिव्यू मिला है, it was very tough to get 100% marks in chemistry, although although in the previous years we found that chemistry was little bit easier. In January session sir, what students said me, math was a bit tough, and chemistry was moderate to easy side. But in this session what happened, math became a bit easier side and chemistry became a bit standard side. So this happened in session. Obviously sir, all the three subjects cannot be equally easy. If Absolutely. all the subjects will be equally easy and all are getting 99.9 percentile, it is very difficult to cut off the rank, predictions, seats, etc. Counseling, many things will be affected. So Absolutely. obviously they have to keep some subject hard and some areas hard, or numerical hard, or MCQ hard, something hard, so that they should be tougher side to make the difference between a very good student and a moderate student and a nominal student and a student who didn't prepare well or who is not serious student. So the demarcation is required. Absolutely, sir. So you get the questions been coming on the way, and the students are looking for the strategy to attend the papers who have their exam in the upcoming shift. So my strategy would be, बच्चों आप सबसे पहले सर्च कीजिए कौन कौन से easier chapters हैं, 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट कीजिए for every subject. Let's say you started with the math, take a round 1, look for the questions which are easier one. How will you look? Look for the statistics question, look for matrix and determinant, look for vectors 3D. ये questions hit करोगे तो chances हैं 90% chances हैं कि आपसे हो जाएंगे. And those who are writing April 8th examination shift, any shift, whatever examination writing on 8th, remember your strategy must be very simple. The simple is, don't study new things. Whatever you know, go summary wise fast revision. Believe that. And just wherever you are confused or the tough chapters are there of chemistry, don't touch them or don't go near them, because what can you do great thing in 1 or 2 days? Absolutely, Sir? absolutely. So therefore they will create confusion. But anyhow sir, the student has to attend memory based questions which are coming. Yeah. And do not leave anything. The base of the every chapter should be clear, because sometimes even it happens sir,
from the difficult chapter, the easier question comes. Yes. And from the easier chapter, difficult question comes. Yes. So it may be opposite trend controversial also. questions they will create. Absolutely. And they create confusion. No All problem, right. sir. So let's have a discussion of the so questions. You continue sir. mathematics, sir. We so have dear a, students, I'll come back with chemistry questions. All right. Yeah. So sir, NCERT base बहुत है क्या? NCERT base बहुत तो नहीं है, लेकिन NCERT base इतने तो है कि आप अच्छा सा क्वालिफाई कर जाए. All right. Like so 12-13 क्वेश्चंस तो 50% हो जाएगा. 50% तो आराम से हो जाएगा. All right. Okay. And if anybody want to clear, at least they want to solve half paper of chemistry of coming up session, then NCERT पढ़ लो, एक बार go through fast कर लो, summary देख लो, okay, superficially, तो कम से कम हाफ पेपर तो आराम से सॉल्व कर लेंगे. लेकिन अच्छे रैंक के लिए ऑब्वियसली अच्छा पढ़ना तो पड़ेगा ही. इज इट क्लियर? तो सर कंटिन्यू करिए. आई विल बी बैक इन Thank you. 2 minutes. Thank you, sir. Bye, sir. And one thing more, guys, I just want to tell you, all those students who are writing on 8th of shift 2, so for them, bachcho, don't take any tension Ravinam, because sir, you will be having there, yeah. much more experience than the students who appeared for the first 2 or 3 shifts. Because you have seen all the memory based questions and now you know how to attempt the paper. The strategy is keep the things simpler. First of all, attempt the easier chapters, easier questions first of all, so that you can get maximum marks. Through those maximum marks, you can gain the confidence and then you go ahead for the questions which are doable. So you need to be very precise in choosing the questions. The art is not attempting the question, the art is the leaving the question. You have to leave those questions which consume 5 to 7 minutes of your time. I hope you understood my point. Now, talking about today's examination, because that is very important and this is the main reason that you're here in this session. The today's examination, math students found to be a lengthier. Physics, it is moderate to it was moderate, and chemistry also it was moderate. It was very difficult to get the marks, 100% marks in chemistry this time also. The students, they suffered with 1 or 2 questions they were not able to solve, and that is the reason they were not able to get 100% marks in the chemistry subjects. Although in the last years our students said that they are able to get the good score. Yeah. So let's have a discussion. See, this is the analysis which we can have the discussion afterwards, but let's start with the question directly from the math section. We got the questions of the math. Let's start with the discussion of math. So here is the first question of mathematics, memory based question these are. And let's begin with the session, guys. Alpha raised to the power k, 1 upon alpha raised to the power k whole square, and this has been given to us as 20, and they have given this summation is from k is equals to 1 to n, and alpha is one of the root of this equation. So guys, do you know whenever we have x square plus x plus 1, so what are the roots of this equation? X square plus x plus 1, what are the roots of this equation? Do you know that? So omega and omega square, guys. X square plus x plus 1 is equals to 0. One of the root is omega and other is omega square. Even you can get the values if you forgot to write directly, you can get the values. So it will be minus b plus minus root over b square, okay, minus 4ac, and then whole divided by 2a. So it will be minus 1 plus minus root 3 iota over 2. So one of the root you will have omega, and other root you will have omega square. Now advantage of writing is, you know that the value of omega cube is 1. Other thing that you need to remember is 1 plus omega square is 0. So if you need to write the value of omega plus omega square, so the answer will be minus 1. So these 2 points you have to keep in mind while attempting this question, okay? Are you able to understand? Now what they have said that alpha is one of the root of this equation. Okay, so alpha is one of the roots, so this is omega raised to the power k. And here it is 1 upon omega raised to the power k. Are you able to understand? So alpha is one of the root of this equation, and they have said omega raised to the power k plus 1 upon omega raised to the power k to the whole square. This summation they are giving us as 20. Guys, if you open up the bracket, see what will happen. Okay, yeah, if you open up the bracket, see what will happen. It will be a square, then it will be b square, guys, and it will be 2ab. Once you do 2ab's, so this a and 1 upon a will get cancelled, so only 2 will be remaining, and this summation you have to solve, and this is given to you as 20. Now they have asked us to write k is equals to 1 to n over here. Are you able to understand? Now think about it, how this 1 upon omega raised to the power 2k has to be solved. Guys, do you know that if I am writing 1 upon omega raised to the power 2k over here, so if I actually multiply both numerator and denominator by omega raised to the power k, it will become omega raised to the power k over omega raised to the power 3k. And this omega raised to the power 3 is 1. So ultimately this is omega raised to the power k only. Don't you think that? Omega raised to the power 2k, omega raised to the power k, and then plus 2. Is that clear to everyone? K is equals to 1 to n. बच्चों जल्दी से बता दो समझ में आया या नहीं आया. एक बार thumbs up दे दो चार्ट के अंदर. Are you all able to understand this?
Okay, one of the student is saying the answer is coming out to be 6. The value of n should be 6 over here. Is that so? बताओ बच्चों, ऐसा लग रहा है n की वैल्यू तुम्हारी 6 आ रही है? थम्स अप दो बच्चों यहां तक, अगर यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार थम्स अप दो. ओके ठीक है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं. अच्छा बच्चों, अगर आप जैसे k की वैल्यू 1 डालते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ k एज 1. इफ यू सब्स्टिट्यूट k वैल्यू एज 1, इट विल बी ओमेगा, this will be 1 upon, this will be omega only, and here you will be observing +2. ये k की वैल्यू 1 आई है बच्चों. अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यू हैव द वैल्यू, नो, यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू दैट इज -1. इसकी वैल्यू तो -1 है, और -1 + 2 करोगे तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या बनने वाला बच्चों? डोंट यू थिंक 1 बनने वाला? ये तो केवल फर्स्ट टर्म k की वैल्यू 1 डालने से हमें ये रिजल्ट मिला 1. ठीक है, अब आपको ऐसा फील नहीं आ रहा जैसे अगर आप k की वैल्यू 2 डालते हैं तो ओमेगा रेज टू द पावर 4, फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, देन +2. अच्छा, ओमेगा रेज टू द पावर 4 तो ओमेगा ही होता है बच्चों, तो फिर दोबारा ये वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 + 2 करेंगे फिर दोबारा 1 आ जाएगा. सो डोंट यू थिंक वॉट एवर द वैल्यू ऑफ k यू आर सब्स्टिट्यूटिंग. अच्छा, यहां पर क्यूब था क्या? यहां पर क्यूब था, ठीक है, अगर क्यूब था तो आप क्यूब करके कर लेना. मतलब अल्टीमेटली मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है. तो अगर मान लो स्क्वायर है तो मैं वैसे कर देता हूं, और अगर क्यूब है तो बस आप यहां पर पावर 3 कर देना, ज्यादा डिफरेंस थोड़ा ना आएगा बच्चों, इट विल रिमेन सेम. ठीक है, तो यहां पर है ना बच्चों, आप इस स्टेप पे भी विदाउट इवन एक्सपांडिंग इट, जैसे 1 अपॉन ओमेगा रेज टू द पावर k है, तो आप इसको ओमेगा रेज टू द पावर 2k और ओमेगा रेज टू द पावर 2k से मल्टीप्लाई कर सकते थे. इस स्टेप पे भी आप ओमेगा रेज टू द पावर k प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2k का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे. अभी तो है ना, जब हमने x को एक्सपैंड कर दिया वो भी तरीका सही है, इट्स अप टू यू. मतलब बहुत सारे तरीके हैं, हर एक्सपेंशन में हर वैल्यू ऑफ k पे वैल्यू रिजल्ट 1 दे रहा है यहां पर. ओके, अब ऐसे हर बार 1 आएगा ना बच्चों, हर बार 1 आएगा तो k की वैल्यू कहां तक ले जानी पड़ेगी? 20 तक ले जानी पड़ेगी. अगर क्वेश्चन ये है तो फिर n की वैल्यू को आपको 20 तक ले जाना पड़ेगा, एंड द वैल्यू ऑफ n इज 20. अब कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर अगर मान लो यहां पर क्यूब होता तो फिर बच्चों फिर क्वेश्चन आप इसमें कन्वर्ट कर देते और इंस्टेड ऑफ टेकिंग पावर 2 ओवर हियर फिर पावर 3 ले लेते, तो फिर भी इजी रहता आपके लिए. मतलब कोई टफ नहीं है, बस पावर होल स्क्वायर की जगह पावर 3 आ जाता. Are you able to understand the concept being used in here in this question or not? जल्दी से बता दो, yes or no? Tell me. चलो बहुत बढ़िया. Okay. There is another question in front of you guys. एक है ना ये indefinite integration का question है. √1 + x² + x है और पूरी में पावर 10 है ऊपर तो न्यूमरेटर में, फिर √1 + x² - x है और पूरे में पावर 9 है, और यहाँ पर 1 अपॉन m दिया हुआ है रेज टू द पावर n, और ये कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहा गया है सी ए कांस्टेंट है, तो m + n की वैल्यू डिटरमाइन कीजिए. ठीक है, अब ये 11 आ रहा है. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, केमिस्ट्री सर कब आएंगे? बस जैसे कि मेरे मैथ के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर आ जाएंगे केमिस्ट्री सर, डोंट वरी. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. आप एक बार है ना इमेजिन करो बच्चों कि जैसे ये 1 अपॉन √1 + x² - x दिया हुआ है. अगर आपने इसको रेशनलाइज किया बच्चों, एक बार थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, ओके, ध्यान से समझना. ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपने इसको रेशनलाइज किया बच्चों, तो होगा क्या, न्यूमरेटर में है ना ये प्लस के साथ हो जाएगा बच्चों, और डिनोमिनेटर में ना a + b a - b ये a² - b² में कन्वर्ट हो जाएगा. डू यू फील दैट? ये कैंसिल आउट हो गया. तो अगर हमने डिनोमिनेटर को 1 अपॉन समथिंग को ये लिखने की कोशिश की तो 1 अपॉन समथिंग विल बी √1 + x² + x. थोड़ा सा दिमाग चला नहीं चला? तो मतलब ये क्वेश्चन है क्या बच्चों? क्वेश्चन ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे, क्या मैं टोटल के ऊपर पावर 19 लगा सकता हूं क्या? मतलब मैं इस क्वेश्चन को 1 + x² का स्क्वायर रूट फिर +x और फिर पावर 19 ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? पावर 19 एंड देन dx. अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ओके, या अल्फा वाले का आंसर 11, यस यस यस, ठीक है, पावर 3 थी उसमें तो 11 आ जाएगा. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखो अगर हमने पावर 2 ली है तो डिफरेंट आंसर है, पावर 3 है तो आपका वाला आंसर है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कैन वी डू दिस क्वेश्चन नाउ? बढ़े आगे, चलो. अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, √1 + x² + x है और पावर 19 बन गया अभी. अब इसमें क्या करना होगा बच्चों? हाउ वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन? इसके अंदर है ना आप √1 + x² + x को एक बार आप t अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, अगर आप जैसे ही इसको अज्यूम करेंगे t बच्चों, इफ यू अज्यूम दिस फंक्शन एज t, देखो होगा क्या, 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, यहां पर 2x आ जाएगा +1, देन dx आ जाएगा एंड देन हेयर dt आ जाएगा.
ऑल राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. ओके, एंड देन हेयर इट इज dx एंड हेयर इट इज dt. क्लियर हुआ बच्चों? यहीं से शुरुआत की थी ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो dt ओवर t आ रही है. आपको दिख रहा होगा dx की वैल्यू जो आ रही है अपॉन इसके साथ ये वाला फंक्शन तो t हो गया वापस से, जहां से आपने बिगिन किया था क्वेश्चन को, ये t हो गया, ये dt ओवर t हो गया. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया आपको? अगर ये क्लियर हुआ आपको तो हमें क्या करना होगा, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है. अब देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे. अगर आपने रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को t अज्यूम किया तो आपको ऐसा लगता है कि जो 1 बाय टी होगा वो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा. अब अगर आपने t प्लस 1 बाय टी कर दिया बच्चों तो आपको तो ट्वाइस ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर है बच्चों? तो अगर बच्चों आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t के टर्म्स में लिखेंगे तो हाफ t प्लस 1 बाय टी हो जाएगा. डोंट यू थिंक दैट? जल्दी से बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया? तो हमारा जो ये क्वेश्चन हमने ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हम t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. देखो क्या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये जो dx की वैल्यू आ गई है हमारी वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हाफ t प्लस 1 बाय टी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ यहां तक? और इस पूरे के साथ में dt और अपॉन t ये चल रहा है, ये dt अपॉन t तो पूरे के साथ में चल रहा है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया देखो यहां तक? अब देखो मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था बच्चों, मैंने इसको t अज्यूम करा तो देखो ये हो गया मेरा t रेज टू द पावर 19. क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये t था तो t रेज टू द पावर 19. अब dx की वैल्यू ये पूरी सब्स्टिट्यूट करनी है आपको. सो यूल राइट हियर हाफ t प्लस 1 बाय टी और साथ में आप लिखने वाले हैं dt एंड फिर आप लिखने वाले हैं अपॉन t. इजी हुआ बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया यहां तक? अब t रेज टू द पावर 19 ओवर t करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा t रेज टू द पावर 18. क्लियर है बच्चों? हाफ को बाहर लिख देते हैं और t प्लस 1 बाय टी. क्लियर है यहां तक? अब आई थिंक आप अब इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे. जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे t रेज टू द पावर 19 हो जाएगा, एक t रेज टू द पावर 17 हो जाएगा. इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर टू यू हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? समझ में आया नहीं आया? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड. जल्दी से बता दो. टेल मी. ओके, दैट्स ग्रेट. अगर बच्चों यहां तक आपको क्लैरिटी मिली, अगर ये सब कुछ समझ में आया आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से उठाते हैं बच्चों. लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 4 and 2. तो एक काम करते हैं, पहले मीन के ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो देखो 2 दिया हुआ है, देन 3 दिया हुआ है, देन 3, देन 4, देन 5, देन 7. और हाउ मेनी आर द ऑब्जर्वेशंस ओवर हियर? जल्दी से चेक करके बताओ कितनी ऑब्जर्वेशंस है. देखो 3, 3 एंड देन 2, 8 ऑब्जर्वेशंस है. और मीन हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? 4 दिया हुआ है. तो हम 8 4 32 कर दें. देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 एंड 7 24, 24 प्लस a प्लस b की वैल्यू आ रही है 32. सो यहां से a प्लस b की वैल्यू 8 आ जाएगी बच्चों. डू यू अग्री विद दैट? दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. साथ में कहा गया है कि वेरिएंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 2, मतलब वेरिएंस यहां पर 2 दिया हुआ है. अच्छा, वेरिएंस होगा क्या? वेरिएंस होगा हमारे पास मीन ऑफ द स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशन. 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8 माइनस स्क्वायर ऑफ मीन. मीन तो हमें 4 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 2. तो बच्चों देखो 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 आपके पास 13, 13 प्लस 9 22 हो जाएगा. 22 एंड 16 अगर आप ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा. 38 एंड 25 लिख ही देता हूं यहां पर. एंड देन 49 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8. इसको 4 स्क्वायर को 16 प्लस 2 कर देते हैं बच्चों, 18 आ जाएगा. यहां पर 18 इंटू 8 कर देंगे, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या आप चाहते हैं मैं वैल्यू निकाल के दूं आपको? लेट्स से 18 इंटू 8 अगर आपने किया तो यू विल हैव 144. और 38 और 25 और 49 को अगर आपने ऐड किया तो 13 एंड देन 22 एंड देन 5 एंड 2 7, 7 एंड 4
11, तो 112, तो ये 144 माइनस 112 आ रहा है बच्चों, ठीक है। एक बार आप भी कैलकुलेशंस को चेक कर लेना, तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 32। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए बच्चों जिनका सम करने से तो हमें मिले 8, और स्क्वायर का सम करने से रिजल्ट जो हमें मिलेगा बच्चों 4 एंड रूट 2 था क्या? अरे यार, क्वेश्चन में देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों से मिल सकते हैं। अगर ये रूट 2 अज्यूम करते हैं अगर हम वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा शायद से रूट 2, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, ठीक है। तो हमें दो ऑब्जर्वेशंस चाहिए बच्चों, ए और बी, जिसमें इन्होंने कहा गया है कि सम करने पे 8 आ रहा है और सम ऑफ स्क्वायर्स करने पे हमें 32 मिल रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 4 एंड 4, तो मतलब ए भी 4 है और बी भी 4 है। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशंस तो 4 4 आ गई बच्चों। अब लास्ट में इन्होंने पूछा क्या, अच्छा 25 प्लस 9 करोगे ना, मान लो 25 प्लस 9 करते हो तो 34 मिलता है। अब ये 32 आ रहा है ना यहाँ पे बच्चों, तो इस वजह से ये 4 एंड 4 पे सेटल हो रहा है। तो अभी अगर ये क्वेश्चन है तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, ओके। अगर आपने कोई और क्वेश्चन दिया तो फिर ए एंड बी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, दूसरी वैल्यूज आएंगी। अभी बच्चों क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मॉड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आप मुझे बताइए बच्चों, ये 233 है, 4 एक बार ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 4 और आ गए, फिर 5 और 7 है। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है? 4 का ही हो रहा है बच्चों, तो मॉड यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला डेविएशन अबाउट मॉड कर दो बच्चों, तो मतलब हर ऑब्जर्वेशन को मॉड से सबट्रैक्ट करना होगा आपको। तो देखो, अब जब आप 2 को 4 से सबट्रैक्ट करेंगे, 3 को 4 से सबट्रैक्ट करेंगे, 4 को 4 से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड देन 5 को 4 से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड 7 को 4 से सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये सारे DI आ गए बेटा। अब इन सबका एवरेज ले लो, जितने भी DI हैं, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालना है, तो आप एवरेज ले लो। 2 + 4, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8/8, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ आई वुड रिक्वेस्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड सर टू कम अप विद द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सब्जेक्ट। मैथ के क्वेश्चन हम लोगों ने जितने भी अभी हमें मिले हैं वो अभी तक कवर कर लिए हैं हमने। आई होप बच्चों तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और वो 3 क्वेश्चंस कैसे हुए, ठीक है, आई होप, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने जने हैं बच्चों, जल्दी से एक बार बताइएगा चैट सेक्शन के अंदर जिन्होंने आज पेपर लिखा है, एंड हाउ डिड यू फाइंड मैथ सब्जेक्ट, जल्दी से एक बार बताइए, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस पता है, जो भी क्वेश्चंस के अंदर एरर आ रहे हैं आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं उनको। ओके सर, एक बार मैं अब यहाँ पर अपडेट कर दूं। ऑलराइट, अपडेट नहीं आया अभी इसमें। ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, ओके दैट्स ग्रेट सर। ऑलराइट, आ जाइए सर। सो वी हैव विद अस सरफराज सर। बच्चे आपको याद भी कर रहे थे केमिस्ट्री वाले सर कब आएंगे, राइट, तो बिल्कुल I came back. All of you all, thank you Akshay sir. थैंक यू सर। So dear students, we are going to see chemistry. अभी chemistry के देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, अबरार अहमद, you can go to rank predictor of infinite learn by Sri Chaitanya. We are having one rank predictor. You can see in description. In description you can see rank predictor. One link will be there. If you click that link and put your details, you are going to get the rank. जनवरी अटेम्प्ट में 99% क्या रैंक होगा सर? और रैंक 99.0 मतलब 18 और 20 हज़ार तक हो सकता, अबरार 18-20 हज़ार तक हो सकता। सो रैंक प्रेडिक्टर के लिए आप लोग, तो केमिस्ट्री, हाउ वाज द केमिस्ट्री सेक्शन एवरीवन, राइट? प्लीज पुट द पोल देयर। हाउ वाज द केमिस्ट्री यू फेल्ट? इजी, मॉडरेट, हार्ड, डेंजर, very danger, whatever it is, right? So most of them are saying the question was moderate. Okay, moderate. So shall we start? Ready? So ready, steady, go. Ready, steady, go. Okay, maximum ionization energy and minimum ionization energy in group 13 elements are. So group 13 elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. This question is very cheap, very cheap question. It is very easy question. So
Here you can see this should be highest, because why it should be highest? Because it is very, very good non-metal. And I don't want to see you the values, but you students may not know the values, but approximately it is 800 kilojoules per mole it is. Hence, it is highest of all. So you cannot remember the values, but it is a non-metal. By that way, boron is number 1. Hence, option 3 and 4 is not possible. Now coming to indium and thallium. So if you see NCERT, indium is approximately 560 and thallium is 580 approximately. And same model of questions came in January session, right? Hence answer is option 1. Okay, everybody give thumbs up. Okay, is it clear everyone? Right? Right? Okay, so answer is option 1. So now थोड़ा स्पीड जाऊं, ठीक है, थोड़ा स्पीड चल जाएंगे. Next question, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. Alcohols is prepared from alkyl halide. So alcohols from alkyl halide, you are preparing alcohols. Alcohols, how to prepare? Aqueous KOH. So aqueous KOH. So this is nothing but nucleophilic substitution. Everybody know this is nucleophilic substitution, but he is saying by elimination. Hence this is absolutely wrong. This is a wrong statement. Then statement 2, alkenes is prepared by. Okay, let us take one alkene. Alkene is prepared from alkyl halide. Let us take one cheap and easy example. Okay, from alcoholic KOH by beta elimination. Yes, this is correct. If you want to go more detail, you know, this is bromine, this is alpha, this is beta, H from here lost, Br from here lost. Hence this statement is correct. Hence this statement is correct. So statement 1 is false, statement 2 is true. Right? Option is 4. Okay, my dear students. Next, shall we go for next question? Right? Now we'll go for next question. Anybody answer this, please? Total number of electrons in chromium. Total number of electrons in chromium for which the value of azimuthal quantum number L is 1 and 2. So dear students, L value, if you remember the orbital, right? So 0, 1, 2 and 3, S, P, D and F, correct? Correct? S, P, D and F, right? So he is saying 1 and 2. 1 and 2 means P and D electrons is asking. Indirectly is asking you P and D electrons. Indirectly he is asking you P and D electrons. Indirectly P and D electrons. Hence, if you write electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 and 4s1, because chromium is exception. So here you can see this is 6, right? This is 6 and this is 5. So 6 plus 6 plus 5. Clear everyone? Clear? Right. Okay. Now moving ahead to this one. A dipeptide. Okay, I'll solve this side. A dipeptide X on complete hydrolysis gives Y and Z. Y on treatment with aqueous HNO2. Will give lactic acid. So lactic acid is this one. This is lactic acid. Okay. Based on Z on heating gives the given molecule. So dear students, this molecule, if you hydrolyze, everybody can see this molecule. If you hydrolyze, you are going to get NH2. Oh, sorry.
right, you are going to get OH and this is NH2. So this is nothing but what? Glycine. Okay, and this compound here water will keep OH. So if you go reverse, so in place of OH, NH2 must be there and this must be alanine. So answer is alanine and glycine. Clear everyone? Answer is alanine and glycine. Clear everyone? I repeat, fast revision. X, okay, gives Y and Z, Y gives lactic acid. So OH is here, so there only NH2 must be there. So it is alanine. And this on heating gives cyclic product. So on hydrolysis it will give glycine. It will give 2 moles of glycine. So reverse if you go, on heating it will give you this compound only, right? Paper was just normal paper it is. Next, this is the most cheapest, easiest question of the century. Everybody, right? This was the most easiest question of the century. So everybody knows that if you take 100% pure calcium carbonate, then calcium carbonate gives calcium oxide plus carbon dioxide, correct? Okay, dear students, right? So if you take 100 grams of this, it will give you 56 grams of this. Or if you take 100 kg of this, it will give you 56 kg of this, right? So if you take 150 kg, then how much kg you will get this? You will get X. Now X is how much? This is 100% pure, right? Then obviously if you try to solve this, you are going to get approximately, where is my calculator, right? So calculator, okay, we can find it, okay. Where is rank predictor? Okay, I will send you the link of rank predictor. You can just copy it, everyone. I'll send you the link of rank predictor. Pranay sir, please send the link of rank predictor to the students, okay. So this is 100%. Now whatever X will come, okay, so X is 100%, then Y will be 75% of it, because 75 is saying. So once you get X value here, keep it here, cross, and you are going to get the answer. So answer will be 84, I think. 84 will be the answer. 84, 83 will be the answer. Got it? Thank you, Lokesh Sharma. Now, I think this is the last question of chemistry. After this, again your physics or max sir may come. Pranay sir, please, you may call max sir, or 81, 83. Shall I solve completely? Check this, 81 or 83? Take calculator and do, please. You check this, 81 or 83. Anybody? Okay, you can just check it, right? Now, which of the following is yellow PPT with iodine in, sorry, a spelling mistake here, this is NaOH. So this is nothing but what reaction? Haloform reaction. Did the question came like this only? Right? Otherwise we will only do, no, if anybody is having problem, we will only solve. We will only solve. Calculator, 1 second, I'll take calculator. Calculator, please. Calculator. Answers will come fast. Answer will come fast. Sir, little help me. Sir. Please, what is X you find out, sir? Right here. So everybody can see. So here X is equal to 150 into 56 divided by 150 into 56 divided by 100. So X is 84 you got. Now 84 is 100%, right? Then 75% is how much?
So if you cross this, 84 into 75, so answer will come 63. 63 kg answer will come. Happy? Take it. Thank you, sir. So actually, I should not do all these cheap and local calculations, but discussions were coming, so I am doing, right? Now the last question of chemistry, which of the following is yellow PPT with iodine in NaOH? So everybody know that any compound which is having this group, methylated group, or any compound which is having methylated alcoholic group, right? If you heat this with halogen and base, X2, halogen and base, then you will get carboxylic acid salt and CH(X3), and this is commonly called haloform. If it is chlorine, chloroform, bromine, bromoform, iodine, iodoform. Hence, you can see this condition is satisfied. I'll change the color one second. This condition is satisfied by here. You can see methylated ketone and methylated alcohol. Hence, answer will be A and B. Got it? So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions of chemistry, right? So now the next question, physics question has appeared. So I invite physics sir, please come, and physics sir will continue. I'll be back in short time with more chemistry questions. Thank you all of you all. Thank you, sir. So we'll continue with the physics one. Oh, yes. Chemistry is done. Again, sir will be back with more chemistry questions. Right now, we'll focus a bit on the physics part. We have got a bunch of questions bit by bit as we are verifying and bringing them up here. So we have a set of questions. We'll be back with more questions as you go about it. Voice is low. Is the voice low, students? Just a moment, students. Yes, Vedant. Hold on. Is it coming now? Just tell me once. Is the voice coming now? काफी बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं. Okay. All right, BB. Just give me a confirmation. Is the audio coming? Yes, I get the answer. I get option C, the answer. But tell me, is the voice coming clear? Low aa raha hai, sir. Check him back. Okay. Okay. All right. Thank you. Just. All right. Okay. So, chalo, let's start with this. Block of mass 25 kg pulled along a horizontal surface by a force at an angle of 45 degree with the horizontal. First, draw out the diagram. Block here on a horizontal floor. I'm applying some force F. मेरे को नहीं पता force का value क्या है. What is the value of force? I don't know. I know that I'm applying it at an angle of 45 degree. They have said that the coefficient of friction is 0.25. And the block travels at a uniform velocity. So let's first get what are the forces acting on the block. Obviously, you have the force, you'll have its two components. You have the F cos 45 and you have the F sin 45. Downwards, it has the mg. In the upward direction, it has the normal reaction. In the backward direction, it has the frictional force. Okay? It is said that it moves with a uniform velocity. Horizontally, it moves with a uniform velocity. This can happen when the horizontal forces are balanced out. Uniform velocity means no acceleration. So horizontal velocities are balanced out. Okay? So on the basis of that, I need to find this frictional force. Since it's moving with a uniform velocity, I know it's kinetic friction. I don't have to think about self-adjusting force and all that. I just need to go to mu times of n. Now, if you look here, n is basically
equal to F mg minus F sine of 45. F sine 45 is basically F by root 2. This is the normal reaction force, which means the frictional force is mu times of this F by root 2. I want the work done, but for work done, I need the force. Force into displacement into cos theta, then I can apply. But I need the force first. I got the frictional force. According to the question, the frictional force is equal to F cos 45. That is why it moves with no acceleration. So this replace with F cos 45. F cos 45 is F by root 2. Mu value is given 0.25. mg is 25 kg, so multiplied with g becomes 250 minus F by root 2. 0.25 is 1 by 4, cross multiply, so I can put it as 4F by root 2. I made 0.25 as 1 by 4, then cross multiplied the 4. That's 250 minus F by root 2. Bring this over, that is 5F by root 2 is equal to 250. 5 cancels, gives you a 50, so I get F is equal to 50 root 2. I got the value of force. Okay? I got the value of force. Now I need the work done. Work done is just Fs cos theta. Force we got as 50 root 2. Displacement is given as 5 meters. And cos theta with the horizontal. Displacement is horizontal. Force is making 45 degree. Cos 45 is 1 by root 2. Take the root 2's out. You have 50 times 5, that is 250. We have our answer. It is 245. It is 245 because this, I believe, they have taken G value as 9.8. Because they have taken G value as 9.8, here you will not get 250, you will get 245. On the basis of that, you will move. Yes, G value is 9.8. That is why it came 245, not 250. Okay? But for ease of calculation, this I have said before, if you see the options are too far away, you can always take G as 10 and calculate till the last step. The slight adjustment you will be able to notice in the options. If the options are very close together, then you have to go with exact value. But here options are far apart, I can go with 10 because it's easier for calculations. Okay? Chalo, let's move to the next question. I think almost everyone went for option C and got it correct. Chalo, go for this one. Displacement of a wave is expressed as xt is equal to 5 cos of 628t plus pi by 2. I think, this is at a specific position, means I'm not bothered about the x position, like at a fixed, I believe this should have been yt or xt, whatever. The position particle, the position variable which comes as kx or ky, that I'm not bothered. I've taken y value as 0 or x value as 0 there. I'm just asked the wavelength if I've given velocity. So from here, you just need to get to the frequency. Just get to the frequency, that's it. You know, whatever is the coefficient of time, that is basically omega, right? So my omega is 628. My omega value is 628. You can leave it like this, but for ease of calculation, because if I work with omega, I'll have to get to a k. From k, I'll have to go to lambda. Easier. 628 can be written as 200 pi. Okay? Because 2 pi is 6.28 times 100. So frequency, which is omega over 2 pi, is basically 200 pi divided by 2 pi, cancel it out, goes with 100. You get frequency as 100 hertz. Done. We got the frequency. Everyone going for 3 meters. Okay. So we have the velocity now. I know v is equal to f lambda. So lambda is equal to v by f. Easy question. V is 300 divided by the frequency of 100. The answer is 3 meters. Yes, it is option D. Correct, correct. Good work, everyone. Chalo, we move to the next question now. We move to the next question.
Students, just put in the poll over there, like, how was the physics section? Those who gave, how many of you gave the test today? Yeah, that is direct formula based. Not 0.33, not 0.33. It's not 1 by 3. It's V by F. It is not F by V. If it was F by V, it would be 0.33. It is V by F. Got it, Juno? This one. Random JEE nerd has given option B. Okay. Metallic ring uniformly charged throughout positive charge. So every point is the same amount of charge over there. Satyam Shlok going for option A. Anurag option A. Rashmita option A. Low sound. Just check. I believe the audio is clear now. So just check it once. On your end, Yashwant. Okay. Acha. So over here, metallic ring uniformly charged. AC and BD are two diameters. Okay, don't really care about that as much. Only important thing is they are mutually perpendicular. Meaning, this point A, B, C, D, basically break it up into 4 quadrants. Exactly 4 quadrants which are similar. Symmetrically, AB as a quadrant is same as BC, is same as CD and same as DA. Now it is given electric field due to AB is O. I know electric field because it's uniformly charged, just because of that is in this direction, just because of AB. Now they have asked you that what is the magnitude of the electric field due to ABC. ABC means this half part. Now you know this AB is going to give you exactly at 45 degree. Given in the question that the field is E and it will be exactly 45 degree because purely by symmetry about AB. You also know same way this BC part is going to create an electric field exactly symmetrically opposite to it, that too at 45 degree. Same, it should be perfectly angle bisector over there, symmetrically opposite. Yes, similar question. Last year's April 1, it was more like you have to integrate over there. Here you don't even have to do anything. You know this is also E, same magnitude, because whatever this is, same amount of charge is here. So that will also create the same field. Basically, you now have 2 electric fields, E, and the angle between them is 90 degree because 45 above, 45 below. So 2 vectors at 90 degree, the resultant is E root 2. Many students might have answered this as 0. This is why I say read the question thoroughly. If they would have said that the magnitude of electric field at O and not written this part, magnitude of electric field at O, you would have got 0 because throughout the field is 0. But if you just look at that half part, that is E root 2. Got it? You don't have to go to that 2k lambda sine theta by 2. Don't have to go to that. It's very direct. That's what I'm telling. In last year's April session, that formula came, Yash. This, it's way more direct. You just have to visualize. It's just logical. It's not even, I'll not even say theoretical. This one, electric dipole moment to magnetic dipole moment. Electric dipole moment to many students. I'll tell you again where students would make a mistake. This is a very common thing. They would consider it as electric field to magnetic field. And they would think, oh, electric field by magnetic field is speed of light. I will get LT minus 1, and that's a mistake. You have to separately get what is electric dipole moment. Electric dipole moment is basically Q times L, right? Whereas magnetic dipole moment is current times the area of cross section. So area of the loop, right? This is electric dipole moment, magnetic dipole moment. It was not P plus Q, it was P and Q. Okay, chalo, we'll do P and Q. We'll find them individually anyway. Many students are saying it's P and Q. Okay. Okay, we'll do P and Q. No issues. Anyway, we have to find P and A. We'll find all 4 at once. Over here, if I put QL by that PE by PM, QL by IA. See, I'll readjust it a bit. Even though like formula wise it doesn't make sense, but dimensional point of view, I can write the charge as current into time. Keep the length as is. Here I have a current.
area can be written as L square. Dimensionally, I'm telling, dimensionally it can be written as length square. Take one of the L's out, take the current out, you are just left with TL minus 1. That's it. You're just left with TL minus 1. This I've said before, do not put Q full dimensional form, current full dimensional form, don't put. First see, can you simplify to a more general form? It saves you a bunch of time. So 0 and minus 1, P is what? P is 0 obviously because there's no mass term here. L is minus 1, yes. So I'll put all of them here. P is equal to 0, Q is equal to minus 1, R is equal to 1 and S is equal to 0. Whatever has been asked accordingly you can get. Bulb ka power wala, we haven't got that yet, Pavan. We'll bring it, don't worry. Chalo, we'll move to the next one. We'll move to our next question now. Wheel is rolling on a plane surface. Speed of the particle on the highest point of the rim is 8 meters per second. Speed of the particle on the ring of the wheel at the same level as the center. Right? I'm assuming it is wheel is pure rolling. I think this should be there in the question. Right? तो इसका बताओ मेरे को. Highest point speed is 8 meters per second. They are asking what is the speed of the wheel on the rim at the same level as the center. Matlab, you have the ring here. Oops. You have the ring here. Top point speed is given as 8 meters per second. This is the center of the ring. They are asking what is the speed of this point. Net speed of that point. Yes, some are saying 6, some are saying 4 root 2. Okay, we'll check. If this is there, you know, if the wheel is rolling with a speed v, with a translational speed v, top point speed is 2v. Which means v has to be 4 meters per second. Now when you consider the side point here, this side point has two velocities. Because of translation, it has the 4 meters per second here. And because of the turning motion, it will have the 4 meters per second here. And the angle between them is 90 degrees. So the resultant is in this direction, which is just going to be 4 root 2. The answer is 4 root 2. Got it? Half distance पे पूछा था. Was it asked half distance? Accordingly, you will have to change then. आपका radius यहाँ पे change होगा. यहाँ पे मैंने पूरा radius लिया. अगर आपने your omega value you have, if you decrease it, this point's velocity will come 2 meters per second. You'll have to do. ठीक है? चलो, we'll go for the next one. Next we have a capacitor question. ठीक है? We have 2 more questions. Then maths will be started. Okay, 3 parallel plates, capacitors C1, C2, C3, each having capacitance 5 microfarad, connected as the effective capacitance between points A and B I'm looking for. So across these two. Space between the parallel plates of C1 is filled with a dielectric of dielectric constant 4. Okay? I'm filling that up with a dielectric constant 4. So as a result, what is the effective capacitance across A and B? Simple question. Normally capacitances are given as 5 microfarad. If I fill the dielectric, I know capacitance becomes dielectric times of the original one. So 4 I've added, so it's 4 times of 5. That's 20. Which means my C1 is 20 microfarad and my C2 and C3 5 microfarad. Take C1, C2 are in series. C1, C2 are in series. Everyone is going for 9, okay? Yes. So if I go with C12, which is the equivalent of C1, C2, that is C1, C2 divided by C1 plus C2. Because they are in series, the reciprocal addition happens. Which is basically 20 times 5 divided by 20 plus 5, which is 25, goes with a 5, goes with a 4. So the equivalent of these two is 4 microfarad. So the
final equivalent is C12 plus C3 because they are in parallel, so it's regular addition. That is 4 plus the C3 is 5. The answer is 9 microfarad. Answer is 9. Okay? Chalo, let's go for the next one. Yes, the answer is 9. I think we have one more question, last question, then math sir will be here. This one says an object is kept at rest at a distance 3r above the Earth's surface, where r is the Earth's radius. The minimum speed with which it must be projected so that it doesn't return to the Earth. Doesn't return to the Earth's speed is the escape speed. But you can't go by the standard formula of root 2 gr because your starting point is already some height above. So you can't go directly with root over root 2 gm by r. Can't go with that. You have to think that you're starting already at a certain height above. So how do we derive escape velocity? Their kinetic energy should be equal to the potential energy. Like the kinetic energy you provide should be equal to the potential energy at the point. So half mv square should be equal to the magnitude of the potential energy, which is gmm by, this is where many students will make a mistake. It is not gmm by 3r. It is gmm by 4r. Why? It is 3r above the Earth's surface. So from the center it is r and again 3r. They have not said 3r from the center of the Earth or at a radius of 3r, nothing. 3r above the Earth's surface. Okay? Yes, many of you are going 2r in the denominator. Leave so, yes, because if this cancels, you have a 2r here, this m cancels. V is equal to root over of gm by 2r. Yes, correct. Okay, so we solved a bunch of questions in physics. I think next we have maths. So we'll be back with more physics questions. We are getting them and we are verifying before we are sending it, bringing it here. So you get the most accurate paper analysis over here, and this entire thing, by the way, is available on our Telegram channel, so make sure you join that. This entire thing is uploaded over there, so you'll get all the details over there. So Akshay sir is here. Sir, आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी है सर, थैंक यू। या आपके लिए फीडबैक था। चलो, तो ईस्ट और वेस्ट अनिरुद्ध सर इज बेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी हैव द मैथ क्वेश्चन। देखो मैथ के क्वेश्चन हमने लगभग 3-4 क्वेश्चंस वी डिस्कस इनिशियली। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द मैथ क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी? जल्दी से बता दो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये एक स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, एक सीरीज आपको दी हुई है बच्चों, देखकर समझ में आ रहा होगा इन्हें टर्म क्या है, इज m upon n। m और n कोप्राइम्स है, देन द वैल्यू ऑफ m plus n दे आर लुकिंग फॉर इन दिस क्वेश्चन। सो हाउ वी हैव टू बिगिन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द nth टर्म। अगर आप यहाँ nth टर्म देखेंगे तो ये 4 into 1 चल रहा है, 4 into 2 चल रहा है, 4 into 3 चल रहा है ना बच्चों, तो ये 4n हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर है ना 4 चल रहा है सभी में कॉमन, तो 4 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 3 into 1 स्क्वायर, 3 into 2 स्क्वायर, 3 into 3 स्क्वायर चल रहा है, तो क्या 3 into n स्क्वायर लिख दें बच्चों, 3 into n स्क्वायर लिख दिया। फिर 1 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 4, n raised to the power 4 लिख दें बच्चों। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारे पास एक बन गई nth टर्म। अब इस nth टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तभी तो टेलीस्कोपिक का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। अब डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स कैसे बनाए बच्चों, देखो 4n है, ये आप इसको n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4 अलग लिख दो और माइनस n स्क्वायर अलग लिख दो, या प्लस n स्क्वायर हो रहा है, तो एक काम करते हैं इसको 4n स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, फिर माइनस n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? मैंने क्या करा, प्लस 4n स्क्वायर कर दिया 3n स्क्वायर की जगह और माइनस n स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन? तो ऊपर वाले को तो नहीं छेड़ते हैं, नीचे वाले को अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस n स्क्वायर। ये nth टर्म आ गई आपकी। समझ में आ रहा है बच्चों हाउ वी गॉट द nth टर्म? यहाँ तक अगर क्लैरिटी से समझ में आ रहा है आपको तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुछ लोगों ने तो आंसर भी डाल दिया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से एक तो a प्लस बी हो जाएगा बच्चों, और एक हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। क्लियर है बच्चों? अब आप मुझे बताओ, हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इन दोनों फैक्टर्स का एक बार सबट्रैक्शन करके देख लो। एक तो बड़ा है इनमें से और एक छोटू फैक्टर है, छोटू फैक्टर। ओके, इनका एक बार सबट्रैक्शन देखो क्या होता है।
जैसे ही आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे ना तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पर 2n आ रहा है बच्चों। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4n क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, यहाँ पर 2n लिख देता हूँ और 2n में ना इन दोनों का सबट्रैक्शन कर देता हूँ। लेट अस सबट्रैक्ट दीज टू। ओके बच्चों, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और इनको अब इस प्रोडक्ट को इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं आता तो इसलिए सिखा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इंडिविजुअली टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्टली एन टर्म लिख रहा हूँ इंडिविजुअल टर्म्स को डिवाइड करके। एक आ जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस वो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, बीच में माइनस है। फिर आ जाएगा आपके पास 1/n स्क्वायर, देन प्लस n एंड देन प्लस 2। तो बच्चों आप मुझे एक बार समझने की कोशिश करना, जैसे अगर मान लो ये टर्म नंबर vn है तो ये vn प्लस 1 हो जाएगी, तो मतलब टर्म नंबर n है तो ये टर्म नंबर n प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला हमें बच्चों, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज m/n। तो आप इनका वो बताओ। तो सम है तो मतलब आप देखो n की वैल्यू 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, तो फिर सबका सम करोगे। तो टेलीस्कोपिक सीरीज है ना, मैं डायरेक्टली लिख दूं। तो यहां पर जो Sn आने वाला है ना बच्चों, ठीक है, वो छोटे वाले में तो n की जगह आप 1 डाल दो, तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और बड़े वाले में यही रहने दो एज इट इज, n की जगह n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो ये हमारा Sn आ रहा है बेटा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इन्होंने तो हमें ये बोला ना n की जगह 20 तक ले जाना है आपको, हमने तो Sn निकाल के दे दिया आपको। तो अब लास्ट में n की जगह क्या डाल देना 20, तो S20 आ जाएगा। उसको किससे इक्वेट कर देना, m/n से। m/n से इक्वेट करोगे तो m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है इसमें? 421 कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है इसका 421, बहुत बढ़िया। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, 420 मैंने तुक्का मारा था, नहीं 420 आंसर नहीं है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी, यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है ये। जिन लोगों ने आज पेपर अटेम्प्ट किया, मुझे मतलब डाउट हो रहा है ऐसा ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। तो चलो फिर भी एक बार मैं बता तो देता हूँ आपको, क्योंकि बच्चों ने ये हमें बताया, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर गिवन बाय 2 - 1 एंड देन 1, और फिर आपको दिया हुआ है दूसरा वर्टेक्स 1 -3 एंड देन -5, और फिर आपको तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है 3 - 4 एंड देन -4, और कहा जा रहा है कि G इसका सेंट्रॉइड है। तो x1 + x2 + x3 ओवर 3 कर देना बच्चों। तो यहाँ पर 2 + 4 करोगे 6, 6 ओवर 3 करोगे तो फिर 2 आ जाएगा आपके पास। फिर y1 + y2 + y3, तो -4 -8 ओवर 3 आ जाएगा बच्चों। और z1 + z2 + z3 करोगे तो -9 + 1 तो -8 आ जाएगा, -8 ओवर 3 हो जाएगा अगेन। क्लियर है ना बच्चों? तो ये आपका सेंट्रॉइड आ गया। अब सेंट्रॉइड आ गया तो ये कह रहे हैं अब A को ज्वाइन करवा दो, तो AG वेक्टर डिटरमाइन कर लो। फिर B को ज्वाइन करा दो, BG हो जाएगा। फिर C को ज्वाइन करा दो, CG हो जाएगा। फिर ये जो डिस्टेंसेस निकालने हैं बेटा, बस AG का जो मैग्नीट्यूड है, तो A और G के बीच में डिस्टेंस, B और G के बीच में डिस्टेंस, C और G के बीच में डिस्टेंस, इन तीनों का इंडिविजुअल आपने स्क्वायर किया और ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, साइड की इक्वेशन है वो। ठीक है, अच्छा पोजीशन वेक्टर नहीं है वो, साइड की इक्वेशन है। साइड के वेक्टर्स दे दिए इन्होंने, ठीक है, तो साइड के वेक्टर्स होंगे तब भी यही हो जाएगा सर 164। अच्छा 164 तुमने आंसर भी निकाल दिया। अच्छा ठीक है, मतलब देखो अगर चाहे ये साइड के वेक्टर्स है, मान लो AB वेक्टर पकड़ा दिया, BC पकड़ा दिया, AC पकड़ा दिया, तब भी क्वेश्चन इजी है ना। मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, आराम से मतलब हो जाएगा। चाहे पोजीशन वेक्टर्स दिए चाहे साइड के वेक्टर्स दिए, इन बोथ द केसेस इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर इसका आंसर 164 होगा, तो ठीक है, हो सकता है 164 आ रहा होगा फिर इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, ओके आई अंडरस्टैंड। ठीक है चलो, अच्छा ये तो हमारे इन्फिनिटी लर्न टेकिंग योर टाइम टू रिप्लाई, ट्रूली अप्रिशिएट, आई विल ट्राई द ऐप। यस हीमा, थैंक यू सो मच। चलो इलिप्स में 4 सवाल आ गए। चलो ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इलिप्स का भी करेंगे। कंसीडर 2 सेट्स A and B कंटेनिंग 3 नंबर्स इन AP। ठीक है, तो हमने 2 सेट ले लिए, एक सेट A ले लिया, दूसरा सेट B ले लिया। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ A 36 और P दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ B 36 और Q दिया हुआ है। अब 36 दिया हुआ है ना, तो बच्चों एक काम करते हैं, 12 - D 12 और 12 + D मान लेते हैं, क्योंकि सम 36 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर 12 - D 12 और 12 + D मान लेते हैं। सो दीज आर द 3 टर्म्स इन द सेट A, दीज आर द 3 टर्म्स इन द सेट B। कहा गया है कि जो P है ना बच्चों, वो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है, 12 - D 12 और 12 + D, ये तो हमें P दिया हुआ है।
और बच्चों कहा गया है जो Q है ना वो भी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है, 12 माइनस डी, फिर ये 12 और फिर यहाँ पर आ गया 12 प्लस डी। अब बच्चों अगर आपको जैसे मान लो P अपॉन Q करना हो यहाँ से, इफ यू वांट टू डिवाइड P अपॉन Q, तो P अपॉन Q अगर करना हो तो 12 से 12 तो कट जाएगा, 12 माइनस डी, 12 प्लस डी, और फिर यहाँ पर आपके पास में 12 माइनस डी, 12 प्लस डी। अच्छा a प्लस बी, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसको 144 माइनस डी स्क्वायर ओवर 144 प्लस डी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बेटा। आया समझ में ये P अपॉन Q कैसे आया? अच्छा यहाँ पर है ना P प्लस Q और P माइनस Q की वैल्यू दी हुई है रेशियो की, क्या दी हुई है एक बार इसको भी एग्जामिन कर लो, 19/5 दी हुई है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो इसमें बेटा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है ना आपको, 19 प्लस 5, 19 माइनस 5, तो आपको समझ में आएगा बच्चों Q से Q कट रहा है, ये 2P हो गया, और यहाँ पर है ना P से P कट रहा है, ये 2Q हो गया, एंड दिस इज 19 प्लस 5 24, 19 माइनस 5 इट इज 14। तो यहाँ से आपके पास में है ना P अपॉन Q की रेशियो आ गया, एंड दैट विल बी 12/7। ये P अपॉन Q की वैल्यू आ गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो अब हमें P अपॉन Q तो हमारे पास है ही बच्चों, तो इसको 12/7 से इक्वेट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 7 इंटू 144, अभी मैं मल्टीप्लाई जान पूछ के नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कॉमन लेके, फिर 12 इंटू 144 और फिर प्लस का 12d स्क्वायर है। अच्छा यहाँ से ना एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, 12d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। अच्छा 12 दोनों के पास है, सॉरी 144 दोनों के पास है, और 12 माइनस 7 5 लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ रहा है एक रिलेशनशिप आ गया कैपिटल D और स्मॉल d में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप? बताओ बच्चों, कोई भी अगर यहाँ तक आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? अच्छा 540 आ रहा है इसका आंसर, कुछ बोल रहे हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं नहीं पेपर डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटिव है। मैथ के अंदर यही लफड़ा है, क्वेश्चन डुएबल होते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि अब पेपर डिफिकल्ट है। तो अब बच्चों ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, और दूसरा रिलेशनशिप ये रहा कि कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस 3। अब कैपिटल D की वैल्यू तुम स्मॉल d प्लस 3 डाल दो तो स्मॉल d की वैल्यू भी आ जाएगी, कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी। तुम बता सकते हो मुझे कैपिटल D और स्मॉल d क्या आ रहा है? जब तुम्हारा कैपिटल D और स्मॉल d आ जाएगा, कैपिटल D और स्मॉल d आ जाएगा, तो फिर तो सब कुछ आ गया ना, फिर तो सारे नंबर्स आ गए A के, फिर सारे नंबर्स आ गए B के, और सारे नंबर्स और A सेट और B सेट के अगर आ गए हैं तो हमसे मांग क्या रहा है? हमसे मांग रहा है ये प्रोडक्ट P और Q। तो बच्चों जब ये स्मॉल d और कैपिटल D मिल जाएगा तो फिर तो P और Q आ गए ना, P भी आ जाएगा। देखो स्मॉल d यहाँ डाल देना, कैपिटल D यहाँ डाल देना, तो ये यहाँ P और Q आ जाएगा, और P माइनस Q आपसे मांग रहा है, इजीली हो जाएगा। अब आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि मतलब स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू क्या होगी? सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर स्मॉल d प्लस 3 डाल दो, कैपिटल D की जगह डाल दो स्मॉल d प्लस 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ये डाल दो बस कैपिटल D की वैल्यू। फिर यहाँ पर माइनस का 7d स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर 144 इंटू 5 कर दो बेटा। क्लियर है ना बेटा? अब 12d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5d स्क्वायर हो जाएगा। 12 6 कितना होता है? 72d हो जाएगा। 12 9 कितना होता है? 108। तो अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। 144 इंटू 5, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7, यहाँ पर 1440 है ना, तो ये 720 हो जाएगा बेटा। बस इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से D आ जाएगा, ये वाला D उठा के यहाँ डाल देना, कैपिटल D आ जाएगा, यहाँ डाल देना, P और Q आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक बार थम्स अप दे दो, क्वेश्चन समझ में आया है तो नहीं है, जल्दी बता दो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अच्छा ये हुआ था आपसे, एक मैट्रिक्स आपको पकड़ाई हुई है, अब पता नहीं देखो कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड सवाल है ना, तो इनमें बच्चे कुछ मतलब क्वेश्चन कुछ और आता है, बता कुछ और देते हैं, तो एक बार करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा हो क्या रहा है। तो लेट अ मैट्रिक्स A विल बी गिवन टू यू, दिस इज अ मैट्रिक्स, और ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है बच्चों, A raised to the power n plus A is equals to A raised to the power n minus 2 plus A square minus I for n greater than 3. Sum of the elements of A raised to the power 50 हमें डिटरमाइन करना है। तो अब ये कैसे डिटरमाइन होगा बच्चों? क्या हाउ विल आई बी एबल टू डिटरमाइन दिस? अच्छा 52 आ रहा है क्या इसका आंसर? चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं बना तो एक बार देख लेते हैं, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आया तो फिर देखते हैं एक बार कैसे होगा। तो बच्चों हमने ना ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कि n ग्रेटर देन 3 के लिए ये एप्लीकेबल है, तो मतलब a क्यूब से अगर आप बिगिन करोगे ना तो यहाँ पर a आ जाएगा, फिर a स्क्वायर माइनस i आ जाएगा, फिर अगर मान लो a रेज टू द पावर 4 निकालना चाहते हो तो फिर ये a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस i आ जाएगा,
ये जो a स्क्वायर माइनस आया ये तो सभी में आ रहा है ना, चाहे a रेज टू द पावर 5 निकालना चाहते हो आप तो a रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आया आ जाएगा। तो मैंने सोचा ये a स्क्वायर माइनस आया अलग से निकाल के रख लूं, क्या है पता लग जाएगा ना, क्योंकि देखो सब में ही आ रहा है, इवन जैसे पावर 50 तक भी जाता हूं मैं तो a रेज टू द पावर 48 आ जाएगा, फिर a स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर तो बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये निकाल के रख लो अलग से। क्लियर है बच्चों, निकाल के रख लोगे? तो a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 1 0 0 1 0 1 और 0 1 0, ठीक है, ये a मैट्रिक्स है, इसका बस आपको 2 बार प्रोडक्ट करना है, 1 0 1 0 1 0, तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर। अब देखो क्या करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 0, सेकंड रो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा आपके पास तो रिजल्ट आ जाएगा 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 0, ठीक है, थर्ड रो से आपका रिजल्ट आ रहा है 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। क्लियर है ना बच्चों, a स्क्वायर समझ में आ गया क्या है। अब एक काम करते हैं बच्चों, a स्क्वायर माइनस आई इवेलुएट कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस आई। तो आपको ये जो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 दिख रहे हैं ना, इनको तो कर दोगे आप 0 क्योंकि सबट्रैक्ट हो गए ना बेटा, और ये ऊपर वाले भी 0 हो गए, तो यहां पर केवल 1 और 1 रह जाएगा बस। बताओ मानते हो या नहीं मानते हो, a स्क्वायर माइनस आई ये होना चाहिए? डू यू अग्री विद मी, a स्क्वायर माइनस आई इतना होना चाहिए? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक बार थम्स अप दे दो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं 14 नहीं होगा, कुछ कई जगह 14 लिखा हुआ है क्या? 14 नहीं होगा, चलो ठीक है, मतलब कुछ आंसर बता रहे हो 14, भाई कोई रिलेशन का आंसर बता दो मेरा। अच्छा ठीक है, चलो अब यहां तक a स्क्वायर माइनस आए तो तुम्हें समझ में आ गया, मतलब ये जो a रेज टू द पावर 48 आएगा ना, अब a रेज टू द पावर 48 में ये वाली मैट्रिक्स आपको ऐड करनी होगी, बस इतना सा ध्यान रखो। अब a रेज टू द पावर 48 के बारे में रिसर्च करते हैं कि क्या a रेज टू द पावर 48 कैसे निकालेंगे। तो बच्चों a स्क्वायर तो समझ में आ गया ना आपको, ये रहा a स्क्वायर। अब एक बार a रेज टू द पावर 4 निकालते हैं, तो a रेज टू द पावर 4 के लिए हमें क्या करना होगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर करना होगा, और a स्क्वायर कितना है 1 0 0, ठीक है, फिर 1 1 0, ठीक है बच्चों, फिर 1 0 1, फिर 1 0 0 1 1 0 1 0 1। अब बच्चों यहाँ पे ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 0, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 0, सेकंड रो को सेकंड से, तो यहाँ पर 1 + 1 हो गया बेटा, 1 + 1 आ रहा है देख लो बच्चों। फिर सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर दोबारा 1, सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 0, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। क्लियर है क्या? a रेज टू द पावर 4 कैसे बना भाई, a रेज टू द पावर 4 कैसे बना, समझ में आया? चलो अब पैटर्न दिखेगा आपको कुछ, a रेज टू द पावर 6 बनाए, 6 बनाते हैं। चलो a रेज टू द पावर 4 जो है ना बेटा, a रेज टू द पावर 4 जो है उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो, और a स्क्वायर कितना है, ये रखा हुआ है अपने पास 1 0 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है बेटा, 1 0 1। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है बेटा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा 0, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करा दो 0, देखो 1 0 0 सेम चल रहा है बच्चों, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 सेम चल रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो 2 + 1 हो रहा है बेटा, क्लियर है? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पर 0 आएगा ना, हाँ 0 आ रहा है 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 + 1, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो तो 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो तो 1। बच्चों पैटर्न दिखने लग गया होगा, जैसे यहाँ पर पावर 4 थी तो 2 बन रहा था, पावर 6 आई तो यहाँ पर क्या बन रहा है 2 + 1 मतलब 3 बन रहा है। अब मान लो पावर 48 के लिए डायरेक्टली लिखना चाहते हो तुम, तो ये 1 0 0 तो कॉमन चल रहा है बच्चों, 1 0 0 कॉमन है ना, ये भी 1 सेम चलेगा, ये 1 0 भी सेम चलेगा, इट इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब, ये 0 1 भी सेम चलेगा, नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। 48 में यहाँ पर है ना 24 पक्का बनने वाला है, देखो 6 में 3 बनने वाला है, 8 निकालोगे तो 4 बन जाएगा 3 + 1, फिर पावर 10 निकालोगे तो 5 बन जाएगा, लगता है नहीं लगता तुम्हें ऐसा कुछ, 24 बन जाएगा यहाँ पे। और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस आए तुम अलग ही निकाल चुके हो, ये रहा 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0,
और 100, 100 नंबर पुलिस का बन रहा है इसमें, तो चलो ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको है ना a raised to the power 50 की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर 53 बन रहा है मेरा। तो बच्चों आपका क्या आ रहा है? 53 सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आपको नहीं लग रहा? अच्छा, आपने ये 52 लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की आपने 52 लिखने में? क्योंकि ये 1 और 1 तो ये 25 बना देंगे इन दोनों को, और फिर ये 3 1 भी तो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ये 3 1 नहीं आए आप लोगों के? तो मेरा तो 53 आ रहा है बच्चों, क्या कहते हो? 53 आएगा, 52 तो नहीं बैठ रहा, 53 जरूर बैठ रहा है। अच्छा, ये इंटीजर क्वेश्चन था क्या बच्चों? व्हाट यू से, वाज इट अ इंटीजर क्वेश्चन? इंटीजर क्वेश्चन था, चलो ऑल राइट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक 3D ज्योमेट्री से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अरे बहुत इजी है। तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन है ना वो कहाँ से पास हो रही है? -1 0 0 से, और इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है ना b1 वेक्टर, उसको बोल देते हैं 3 4 5 है। फिर दूसरी लाइन हमें पकड़ा दी, उसके लिए कहा कि वो पास हो रही है p2 1 से, p2 1 से पास हो रही है, ओके। और उसका पैरेलल वेक्टर क्या है? लेट्स से वो b2 है, तो वो हो गया 2 3 4, ओके। चलो अब इनके बीच में डिस्टेंस बोला है बच्चों। ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है, तो ये स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाना होगा। a2 - a1 कर दो बेटा, a2 - a1, ठीक है। और फिर इसका a2 - a1 का क्रॉस मतलब डॉट करना होगा b1 क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 एक बार निकाल लें क्या? वो इजी रहेगा, फिर डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये डिस्टेंस हमें आ जाएगा, और डिस्टेंस शायद से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 1/√6 इज द डिस्टेंस। फिर हमें क्या कह रहा है कि स्मॉल a छोटा है स्मॉल b से, स्मॉल a और स्मॉल b है कहाँ लेकिन? देन द लेंथ, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गया बेटा। एक बार है ना इसको इग्नोर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने, कुछ गड़बड़ कर दी मतलब दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, स्मॉल a और स्मॉल b तो है नहीं। इस क्वेश्चन को इग्नोर करना, भी आप सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करो। ऊपर वाले में सिर्फ मुझे लग रहा है p वैल्यू निकालनी होगी। तुम क्या बोलते हो? p वैल्यू निकालनी होगी बस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 की वैल्यू लिख दो, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू लिख दो, ओके। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा ij के b1 वेक्टर देख लो क्या है 3 4 5, और b2 वेक्टर देख लो क्या है 2 3 4। अच्छा, इनका है ना आप एक बार क्रॉस करोगे ना तो 16 - 15 1 आ जाएगा, फिर माइनस का j हो जाएगा बच्चों 12 - 10, तो ये 2 आ जाएगा, और फिर k हो जाएगा बेटा तो 9 - 8, यहाँ 1 हो जाएगा। तो मतलब ये जो वेक्टर आ रहा है ना आपके पास में 1 माइनस का 2 और 1, 1 माइनस का 2 और 1, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 + 1 + 1 √6 आ रहा है। ये वाले √6 है, ये वाला √6 गया। अब p + 1 डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, p + 1 - 4 + 1 = 1। तो बस अब सिंप्लीफाई करना है, p + 2 p - 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, और = 1। तो p की वैल्यू मेरी तो 3 आ रही है इसमें, बाकी देख लेना आपकी क्या आ रही है। 2/3 आ रही है p की वैल्यू, मेरी तो 3 आ रही है बच्चों इसके अंदर, ठीक है। एक बार देख लेना आप, कुछ आपने मतलब क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकती है ना, पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं है। ये डिस्टेंस सही था 1/√6, क्योंकि डिस्टेंस 1/√6 था, तो फिर तो p की वैल्यू यही बनेगी, ठीक है। तो चलो, अच्छा एक लेटेस्ट रेक्टम वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर 2/3 आ गया इसका, लेकिन इसमें p की वैल्यू ये है। अब इसके बाद कुछ और भी है, अगर पार्ट में p की वैल्यू से कुछ करवा रहा है आपसे, तो फिर वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर है ना एक और है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो पॉजिटिव भी आंसर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप इसमें दोनों ही आंसर्स कर देना बेटा, पॉजिटिव भी कर देना, नेगेटिव भी कर देना। तो देखो अंदर है ना अल्टीमेटली ये p - 2 बन रहा है, तो एक आंसर तो p की वैल्यू 3 से हो जाएगा, और एक p - 2 = -1। तो यहां से p की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 2 - 1, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो दो आंसर्स मतलब जनरेट हो रहे हैं यहां से, ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट। अब तुमने क्या बोला यहाँ पर मुझसे? सर क्वेश्चन पूरा यही है, लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। लेकिन a और b कहाँ है इसके अंदर? कहीं भी a और b तो दिख ही नहीं रहे। मतलब ये तो लेट द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज दिस। अच्छा, लेट द वैल्यूज ऑफ p, ओहो 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 ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा फिर ढंग से, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो
तो ये वैल्यूज जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी हो गई, जहां पे स्मॉल ए तो छोटा है और स्मॉल बी बड़ा है। तो एक तो 1 आ गया आपके पास में और एक वैल्यू आ गई आपके पास में 3, और 1 और 3 आ गया तो फिर LR तो निकाल ही लोगे, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए। चलो ठीक है, सो आंसर, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सोचा यार ये 3D तक है, और मुझे लगा फिर आगे का ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अच्छा मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा, अपने आप ही मैंने जजमेंट दिखा दिया। चलो ठीक है। अच्छा एक बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर मतलब ये एक सेंट्राइड वाला क्वेश्चन था, अगर उसमें साइड्स होती तो वो उसको कैसे करेंगे? तो तुम सोचो ना बच्चों, जैसे अगर मान लो ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है, ये सी वैक्टर है, तो ये तो बी माइनस ए हो गया, नहीं लग रहा तुम्हें? और ये सी माइनस बी हो गया, और ये सी माइनस ए हो गया। मतलब ये जैसे ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये एक ए सी हो गया। तो ए सी को तुम सी माइनस ए लिख दो, ठीक है? ए से बी जाता हुआ, बी से सी जाता हुआ, और यहाँ पर है ना ए से सी जाता हुआ वेक्टर है ये ए सी, सी माइनस ए। इसको उल्टा भी लिख सकते हो तुम, ठीक है? अब मान लो तुम्हें, अगर मान लो तुम्हें यहाँ पर सेंट्रॉइड का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो सेंट्रॉइड का एस्टैब्लिश करना है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होता है। तो अगर मान लो इन सभी का तुम एडिशन करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन सब का एडिशन मतलब ए बी वैक्टर का सम करोगे, बी सी वैक्टर का सम करोगे और ए सी वैक्टर का सम करोगे, तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कुछ ऐसा बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब तुम यहाँ से बोल रहे हो कि ये 2a स्क्वायर बेबी, ए और बी किसको अज्यूम करते हैं वो डिटरमाइन हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है? ये तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, टेंशन मत करो बेटा। यहाँ से ट्वाइस ऑफ मतलब a लेस देन b है ना, तो ये वर्टिकल एलिप्स है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये 2a स्क्वायर बाय b हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। लेट द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला बी दिस। अच्छा तुम्हें ये पता है हाइपरबोला में, जैसे मान लो अगर मैं हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाला लेता हूँ, तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लो बेटा कि कोई भी एक पॉइंट इन्होंने बोला P4,3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये 4,3, ठीक है? इसका डिस्टेंस इन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम द फोकस, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस बोला इन्होंने, ठीक है? अब सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस है ना बच्चा, तो एक बार यहां से समझने की कोशिश करना। तो जैसे आपको ये पता होगा ये PS1 हो गया, और ये यहां पर है ना, इसको मान लो PD मान लेते हैं। अगर मान लो PS1 ओवर PD करेंगे तो यहां पर इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, तो PS1 की वैल्यू E टाइम्स PD आ जाएगा। और अगर हम PD डिस्टेंस लिखेंगे तो मान लो ये x कोऑर्डिनेट है बच्चों 4, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 4 इस पॉइंट का, और ये जो डिस्टेंस है ये a बाई ई है इस हाइपरबोला के अकॉर्डिंग। तो ये x माइनस ए बाई ई हो गया ना बेटा डिस्टेंस, क्या लगता है तुम्हें? तो ये x माइनस ए बाई, ओके? तो अब है ना ध्यान से समझना, ये EX माइनस ए होता है पॉइंट का फोकस 1 से डिस्टेंस। ऐसे ही पॉइंट का फोकस 2 से डिस्टेंस जो होता है वो EX प्लस ए हो जाता है बेटा। इसी वजह से इनका सब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन, तो फिर वो 2a आता है। इस वजह से द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस इज 2a। लेकिन उन्होंने तो सम बोला हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो अगर सम बोला हुआ है तो PS1 प्लस PS2 को आप ऐड करवा दीजिए, तो a से a कट जाएगा, 2EX आ जाएगा बेटा। क्लियर है ना? और ये जो 2EX की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 8 टाइम्स √5/3। अब है ना x कोऑर्डिनेट आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4e की वैल्यू डाल देना, 8 √5/3 हो जाएगा बेटा। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो e की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स √5/3। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ वी गॉट दिस? अच्छा कुछ एक बार चेक कर लेना। अरे मैंने 2 into 4 तो किया नहीं, सॉरी, ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये तो मैंने लिखा नहीं है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये e आ जाएगा, तो e स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5/3 हो जाएगी। और मुझे पता है कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इन द केस ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पर 5/3 -1 कर दोगे तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा बेटा 2/3, और 2/3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3b स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास में हो गया है पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप अगर बच्चों निकालना चाहते हो तो हाइपरबोला पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 4,3, तो यहां पर 4,3 एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये एक दूसरा रिलेशनशिप हो गया।
क्लियर है बच्चों? तो अब इन दोनों रिलेशनशिप्स को सॉल्व करना, ए और बी की वैल्यू निकालना। अब ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर तो आपके पास ये लेंथ ऑफ एल आर आ जाएगा ना। देख लेना ए बड़ा है या ए छोटा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दुगुना ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2 बी स्क्वायर आ रही है, तो मतलब बी से तो बड़ा ही आएगा ये। तो फिर ये लेंथ ऑफ एल आर की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर है ना? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? विल यू बी एबल टू डील विद दिस क्वेश्चन? जल्दी से बता दो, आप डील कर पाओगे इस क्वेश्चन को? कोई डाउट लग रहा है आपको इसके अंदर? क्योंकि देखो बहुत इजी सा हो गया ना ये। बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल देना यहाँ से 2a स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ पर डाल दोगे 2a स्क्वायर बाय 3, ओके। और यहाँ पर 1/a स्क्वायर को कॉमन ले लेना, तो 16 माइनस 27/2 आ रहा है। अब ये 5/2 आ जाएगा, तो 1/a स्क्वायर के साथ आ रहा है 5/2, और यहाँ पर आपके पास में आ रहा है 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू 5/2, a स्क्वायर की वैल्यू 5/2 है, यहाँ डाल देना 5/2, तो b स्क्वायर की वैल्यू 5/3। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गए तो फिर तो लेंथ ऑफ एल आर इजीली आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बाय। क्लियर है? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है तो आई होप मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सरफराज सर इज विद अस, ही विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री विद यू। बच्चों हाउ इज द मैथ पेपर? कैसा लगा बच्चों मैथ का पेपर? अभी और भी जो क्वेश्चन बचे हैं विल हैव अ डिस्कशन, बताओ। चलो ठीक है, सरफराज सर यू मे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Hello, all of you all. Welcome. We'll continue with our chemistry questions. Thank you, Akshay sir. So dear students, let us continue with the chemistry questions. Okay, very cheap, very easy, very cheap question. Okay, what is that question? Look and see. Is that IUPAC name of the following? So if you remember in IUPAC nomenclature, here alkene is there, and here you can see at this terminal alkyne is there. You go any direction, you can see that OH is at 4th position only, and we know in priority order alkenes has more priority than alkynes. Okay, in the order of priority, alkenes has more order than alkynes. Hence, if you start numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here you can see 4 hydroxy hept 1 in. So 1 in 6 sign. I think this is the answer. Please write. Got it everyone? Hept 1 in 6 ein. 1 in 6 ein. Right. Fourth one is also like synonym of it. Right? Okay. Next, which of the following first cation is more stable than second? So here first one is more stable than second because here lone pairs are there which will donate here, correct? Right? Hence A is correct. So hence answer 2 cannot be the answer and 4 cannot be the answer, correct? Next, now if you come here, this is having resonance, right? So therefore this is more stable, so hence C cannot be the answer. Here this is tertiary, but actually this is more stable because of plus I effect, so D cannot be the answer, right? And if you come to this one, nitro is here at meta position and here it is at ortho position, hence answer should be A and B. Clear everyone? Is it clear everyone? Any objection, any confusion? So this is memory based, then answer also will be wrong, both will go wrong. Is it clear dear students? Okay. Now moving ahead, consider the following complex ions. Okay, right, complex ions, and he is asking what is the correct of unpaired electrons order. He is asking unpaired electrons order. So everybody should know that in NiCO taken 4 times, the hybridization is sp3, correct? sp3, and nickel has 0 oxidation state. That means it is 3d8 4s2 in presence of ligand L for ligand, it will become 3d10
10, 4s 0 and 4p 0. Therefore, the number of unpaired electrons with nickel will be 0. That is for sure. Next, if you see Ni, this is 4 dear students, by mistake it is 6. NiCN taken 4 times to the power minus 2. This hybridization is dsp2, and here nickel is Ni plus 2. Hence, it is 3d8 4s0, and in presence of the strong field ligand, all the 3d8 will become paired. They all will become paired. Hence, number of electrons will be 0 here. Hence, we came that A and B must be equal. Hence, without thinking much, we can directly take answer 4. But for your kind information, I will tell you this is sp3d2 hybridization. Okay, and I think this has 4 unpaired electrons. You can check it. Right? Okay. Okay. Anybody have any objection? So in exam, no need to solve everything. Any 2 you solve like this, you can get the answer. Because some students, what they'll do, they'll try to solve all the options. Time will get wasted. So any 2 you solve, immediately you can get the answer. Next, the incorrect relationships of the following pairs: Mn plus 2, iron plus 2. So you can solve this by many ways. One way is more charge. So charge on cation, if it is more, then it is directly proportional to ionization energy. We know this. More charge, more the ionization energy. Right? So here you can see these 2 you can discuss based upon charge. And if you move from scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, if you go like this, size decreases, it becomes constant and slightly increase, right? So hence, iron must be little bit smaller than, slightly smaller than manganese, slightly, negligibly, right? Okay. Next, consider the following: 0 order reaction, A2 products, half-life of reaction is 1 hour. So here he is saying, here is the hint, 0 order. So half-life of the reaction is 1 hour. Okay. If the initial concentration of the reactant is 2 moles per liter, find the half-life of the reaction in minutes if the initial concentration of the reaction is 0.05 molar. So dear students, so we know that half-life is proportional to initial concentration to the power 1 by 1 minus n. Correct? So here n is equal to 0. Therefore, half-life must be proportional to initial concentration. Correct, dear students? So therefore, I think next Max sir is going to come. Pranay sir, right? Max sir, right? So therefore, initial how much it is? 1 hour. So 1 hour, and time, let us say it is t. Correct? And what is the initial concentration? 2, and this is 0.5. Correct? So hence 1 by t is equal to 4. 4, therefore, t is how much? 1 by 4 hour. So one mistake students can do in the class, they may directly write 4. How many of you wrote 4 hours? 4 hours multiplied by 60, 240 minutes, wrong. Wrong, 240 minutes is wrong. Maybe some students have done. So here 1 hour. So 1 hour means here 1 by 4 into 60, and this is 15 minutes because the question is in minutes. Right? Okay? Okay, dear students? Oh, here I wrote 6. Okay, 60 because hour meant, right. Is it clear? Okay, dear students? Right, I wrote 6 because hours 60 minutes, right? How, okay, or 1/4 hour you can write. So don't forget that this discussion is in hours, and here where it is in minutes. Here he is asking here in minutes. Okay, sir. Okay, so dear students, so chemistry questions, few more are there. I'll be back, and I think physics questions are there. Next questions physics came. So our physics sir, Ravindram sir, please. Yes.
continue with physics, because Thank you, chemistry, sir. either the chemistry questions will be tough, lengthy, or they will be very short lived. Okay, so Ravindran sir, Okay. please continue with your Thank you, questions. Thank you all of you. I will be back shortly. Hello everybody and welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya, and let's start with our physics questions. Okay, fantastic. So there are some questions of physics that are available to us right now and we will be discussing them. Hello everyone. Okay. So the first question, as you can see, is there are n number of identical electrical bulb. Each is designed to draw a power P supply. Okay, the total power drawn by the series combination is. Okay, so let's take a single bulb. It must be having resistance R. Let's say it is connected with a battery. Not much information is given in this question. So we'll assume that the bulb is connected to a battery of voltage V volts, right? And let's say the resistance of the bulb is R. So what is the power consumption for this particular circuit? Let me know. The power consumption, you will say, sir, power consumption will be V square by R, right? This is for a single bulb. Now if you put all these bulbs in series like this, okay, and then they are connected with the same battery, same voltage. Now what is the power consumption they are asking? Very simple. So what we will do is we will say, okay, fine, how many resistances like this? This is R, 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 like this up till R. How many total? N. So what is the equivalent resistance in this? You will say, sir, NR. So what is the overall power? Total power consumed, it will be V square by R equivalent, we can say, right? And what is this? V square by R equivalent will be NR. So this will become V square by R upon N, which is P by N. Is it clear, everybody? Independent था voltage से, see, हाँ तो इंडिपेंडेंट है ना, वोल्टेज को हमने यूज नहीं कर, बट हमने बस ये बोला है कि जो वोल्टेज इसको सिंगल बल्ब का पावर मेजर करने के लिए यूज हुआ है, वट एवर वोल्टेज इज देयर अक्रॉस अ सिंगल बल्ब, सेम वोल्टेज विल बी यूज्ड फॉर n बल्ब्स कॉम्बिनेशन. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो अगर आप n बल्ब्स को सीरीज में लोगे तो पावर p बाय n हो जाएगा. सो एज पर दिस अवेलेबिलिटी, दिस शुड बी द आंसर. ओके, आई स्क्वायर बाय आर लेंगे भाई, आई स्क्वायर आर लेंगे, वी स्क्वायर बाय आर भी ले सकते हैं ना. क्यों? जब इसको पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे यहाँ से, तो एक सिंपल आर इक्विवेलेंट इज कनेक्टेड विद वी, तो वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं ना. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें YDSC का क्वेश्चन. सो इन YDSC, जैसा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इन अ सेंस, इसमें YDSC के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का भी एक मेजर कॉन्सेप्ट जो है इन्वॉल्व है, राइट? NP आंसर, N by P आंसर है. So okay, fine, let me get the correct question, whatever it is, because as per this data the answer is correct, but let me get the correct question properly in which the data is properly mentioned, then I'll bring back that question again, don't worry. So let's come to this question. In YDSC slits are separated by 1.5 mm. So अभी इसमें क्या करेंगे, ये रहा हमारा YDSC सेटअप और ये जो स्मॉल d है ये 1.5 mm है. This is small d, right? Now they have mentioned that the overall width is how much? Capital D is how much? 2 meter. They have mentioned this, okay? And the wavelength also is mentioned, which is 400 nanometer, right? Now what they have said in this question is this width is, let's say, d dash. This width is what? Let's say d dash. This is the width of the slit, okay? Now what they are saying, in YDSC slits are separated by 1.5 mm and d lambda is given. It is observed that 20 maximas of double slit, how many? 20 maximas of double slit lie inside the central maxima of single slit diffraction. Okay, so look here carefully, students. 20 maxima. What is the width of a
what is the fringe width in a YDAC? So in a YDAC, the distance between two consecutive maximas or fringe width beta is lambda d by small d. Okay, and in single slit, okay, and in single slit diffraction, what is the maxima? What is the width of the central maxima? It is 2 times lambda d by d dash, okay, where d dash is the width of the slit, right? Now they are saying that 20 maximas of the double slit, 20 maximas of the double slit, that means 20 times beta is equals to beta dash. So 20 maximas of double slit lie inside the central maxima of a single slit diffraction. ठीक है, तो ये हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो रहा होगा. दे आर सेइंग इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ है, जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है, इसमें 20 मैक्सिमाज ऑफ YDAC आ जा रहे हैं. ओके, 20 मैक्सिमाज ऑफ YDAC इस तरीके से आ जा रहे हैं. जस्ट एग्जांपल आई एम पिकिंग अप. ओके, सो 20 लैम्डा d by small d will be 2 lambda d by d dash. Fine. So what we will do is we'll cancel this 1 10. So what is d dash coming out to be? D dash is coming out to be d by 10, which is 1.5 by 10 millimeter, approximately 0.15 or exactly 0.15 millimeter. Is it clear? Was this question there in the paper, students? Was this question there in the paper? So what is d dash? Is the width of the single slit. So generally it is said that whenever YDAC is taking place, we are trying to understand the interference pattern here, right? But at the same time, because of these single slits, single slit diffraction pattern is also observed here. And they have beautifully mixed both these concepts in this question, and they have said yes, 20 maximas of YDAC have been lie inside the central maxima of this single slit diffraction. Beautiful, right? Okay, so I hope this question is very well understood to all of you. Shall we move on to the next question? Okay, why there are mathematics questions here? Should I refresh or what? Praniji, can you just ask him why mathematics questions are coming? Okay. No, there were physics questions. Total 9 questions were there in physics, which I wanted to discuss. So maybe mathematics teacher want to discuss a mathematics question first for you all. That's why. Okay. So there are some more questions. I'll just discuss the concepts till I receive the questions. So apart from this, there are questions from polarizers. Okay. So पोलराइजर के क्वेश्चन हैं पेपर में, और इसके अलावा इसमें रोटेशन से भी इस बार क्वेश्चन आए रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, एंड थर्मल एक्सपेंशन से भी एक क्वेश्चन है हमारे पास अभी, एरियल एक्सपेंशन, नाइस क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन हमारे पास है अभी शेयर स्ट्रेस से. ओके ओके,
Okay, students. So yes, I guess now we are receiving. So there was some, I guess, some problem at the back end, but anyways, it is sorted out now. So we are back with the physics questions, and so let's start with this physics question. What it is saying: a finite size object is placed uniformly normal to the principal axis. Now this is a really nice question. So they have mentioned a finite size object is placed uniformly normal to the principal axis. Okay, uniformly normal to the principal axis at a distance of 30 centimeter from the convex mirror of focal length 30 centimeter. Right? So let me show you. This is convex mirror, and what the focal length is given? Focal length is given 30 centimeter, right? And the object is kept here at a distance of 30 centimeter only. Let's say the object is kept like this, right? Now let's find out first of all where its image is being obtained. Okay, let's find out where its image will be obtained for a convex mirror, right? Yes, 7.5 is the right answer. Here we will say that 1 by V plus 1 by U is 1 by F. Let's go very simply. So 1 by V plus, what is U? U will be minus 30. So we'll say, sir, it is minus 30. Focal length will be plus 30. So 1 by V is 2 by 30. That is 1 by 15. Okay. So V is 15 centimeter. Now since it is plus 15 centimeter, right? Since it is plus 15 centimeter, that means the image will be obtained somewhere here. Obviously, we know that with a convex mirror, the image that is obtained is what? It is a virtual image, right? Virtual, and let's say it is erect image, right? Virtual and erect image. Now, they are saying that, anyways, so they are saying we have to put another mirror. Which mirror? A plane mirror is now placed parallel, placed such a way that the image produced by both the mirror coincide with each other. Okay, right? So अब क्या करना है यहाँ पे mirror row को रखना है. What is this total distance? This distance is 45 centimeter. Now this is object, this is image. The image due to mirror should also be obtained here. Now we know that in case of a plane mirror, if the object is x distance in front, image will be x distance inside the mirror, right? That means mirror should be placed at exactly the midpoint between the object and image, right? So we will say the mirror is placed somewhere here. What is this distance? Exactly half of 45 will be 22.5 centimeter. Do you understand that? So exactly half of this is this. That means if you place the plane mirror here like this, its image will be obtained here. So what is this distance? They want to find out the distance between the two mirrors. Let's say this is x. So how much will be x? You will say, sir, x will be 30 minus 22.5. Okay. So x will be 30 minus 22.5. That is 7.5 centimeter. Is it clear, everybody? हाँ, हिमा बोल रही 77.5 मिला. अब अभी समझ आ गया 7.5 कैसे आ रहा है इसका आंसर? ठीक है, चलिए. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Again, yes. So two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that the intensity of the transmitted light will be 0. That means these two polarizers are completely cancelling out each other. That's what it means. So two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that the intensity of the transmitted light will be 0. A third polarizer P3 is inserted between them at a particular angle between P2 and P3. The transmitted intensity of the light passes through the polarizers is maximum, then the angle between P2 and P3 is. Okay, so let's understand this. So they are saying there are two polarizers like this. Okay, this is polarizer P1, this is polarizer P2, and they are completely cancelling out each other. That means if its transmission axis is like this, its transmission axis will be perpendicular to the initial one. Okay, perpendicular to it. That is why if the intensity of light is I naught here, it will come out to be 0 here. Right? Now we will use Malus law here, students. Okay. Now what else? They are saying you have to put another polarizer P3 in between them in such a way that it makes an angle theta. Its transmission axis makes an angle theta with the transmission axis of P2. That means this is theta. So what is this angle? 90 minus theta. Are you understanding this much? Okay, let's read the question once again. Two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that they cancel out each other. Third polarizer P3 is inserted between P1 and P2 at a particular angle between P2 and P3. That is theta. Right? The transmitted intensity of the light passes through the polarizers is maximum. So we have to adjust the value of theta in such a way that whatever light we receive at the end is having the maximum possible intensity with the arrangement of these three polarizers. Do you understand? So in general what we do is, we say, sir, this is I naught. So let's say light is coming here, I naught. When light comes here, it becomes I naught by 2. On passing through the first polarizer, it will become I naught by 2. Then here it becomes I1 and then here it becomes I2, let's say. They are saying I2 has to be maximized. Right? Yes or no? Now let's talk about I1. What is I1? I1 is I naught by 2 cos square of the angle between the transmission axis of P1 and P3, which is 90 minus theta. Okay, so I1 is I naught by 2 sine square theta. I1 is what? I1 is I naught by 2 sine square theta. Now what is I2? I2 is I1 times cos square of the angle between them. This angle is theta. Okay. So it is I1 is how much? I naught by 2. Right? I1 will be, students, I naught by 2 sine square theta cos square theta. Right? Clear, everybody? Now you can slightly rearrange and say, sir, it becomes sine of 2 theta whole square. Right? So finally, if you see intensity I2, the final intensity which is coming out is I naught by 8 sine square 2 theta. Right? Now we have to maximize this intensity. That means we have to maximize the value of sine 2 theta. Now sine 2 theta maximum value can be 1, and it will happen only if 2 theta is pi by 2 and theta is pi by 4, that is 45 degrees. Clear, everyone? Okay. Chaliye, बहुत बढ़िया. Let's move ahead. Let's discuss this particular question. Match list 1 with list 2. Okay. So isobaric process means delta Q must be change in internal energy plus work done.
and work done for an isobaric process is how much? P delta V. Okay, so we will say delta Q is delta U plus P delta V. Is it okay? So which option is correct? Option D is correct for this. So D will match here. Now isochoric, what do you mean by isochoric? By isochoric we mean that volume is constant. Volume constant means work done will be 0. Yes or no? Volume constant means work done will be 0. So हम बोल सकते हैं यहाँ पर delta Q is delta U plus 0. So delta Q must be equal to delta U. So this will be B option. Now let's talk about adiabatic process. So adiabatic process we know it is what? Delta Q must be 0. That means option C matches here perfectly. अब इसके बाद लास्ट क्या है? आइसोथर्मल. अब आइसोथर्मल के लिए क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल में डेल्टा T is 0. So delta U is 0. Hence we can say delta Q is equal to work done. Okay, and delta Q is equal to work done. We can say it is option A. So correct matching will be how much? D, B, C, A. This will be the correct matching for this particular question. Clear everybody? Okay. Now let's move on to this. Okay, consider a rectangular sheet. Now this is also a good question in physics. Consider a rectangular sheet of solid material. So here length is given 9 centimeter, D is given 4 centimeter, alpha is given something 3.1 into 10 to the power minus 5 per Kelvin, students. Okay, at room temperature and 1 atmosphere, right? Now the mass of the sheet is given. Now question takes a different turn here. Mass of the sheet is 0.1 kg. Okay, and the specific heat capacity is given 900 joules per kg per Kelvin, and the heat supplied is 8.1 into 10 to the power 2 joules. Okay, so this much data is clearly mentioned in the question, and what they have asked, the change in area of the sheet is. Okay, what is the change in area of the sheet that they have asking? So इस क्वेश्चन में मेनली करना है आपको डेल्टा ए बाय ए चाहिए आपको. डेल्टा ए बाय ए कितना होता है? बीटा डेल्टा टी. सो डेल्टा ए वुड बी ए इंटू बीटा को मैं 2 अल्फा लिख सकता हूँ इंटू डेल्टा टी. सो चेंज इन एरिया वुड बी 2 ए अल्फा डेल्टा टी, राइट. अब यहाँ से चैलेंज क्या है? हमको पता करना है डेल्टा टी. अच्छा, एक और इक्वेशन दी है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. तो अब यहाँ से डेल्टा टी को क्या लिखोगे? ये हो जाएगा Q अपॉन एम डॉट सी, राइट. नाउ दिस वी कैन पुट हियर. सो फाइनली डेल्टा ए इन दिस क्वेश्चन delta A would be how much? 2A alpha Q by M dot C. Now you just put your values here. 2 into area is how much? 9 4s are 36 into 10 to the power minus 4. Now alpha is how much? 3.1 into 10 to the power minus 5. Okay, so 2A alpha into Q. Q is how much? 8.1 into 10 to the power 2. Okay, this. Now M is how much? M is 0.1, C is 900. 0.1 into C is 900. Now after solving this, yes, after solving this we can get our correct answer. So delta A will come out to be, let's keep it centimeter square only, let's remove this. Okay, let's keep it in centimeter square only, this is not required. Okay, now so how much is this? 181 109. Okay,
So 2 into 36 into 3.1 into 9, okay, into 10 to the power, achha, this will also get cancelled. So it will come out to be 10 to the power minus 5 centimeter square. Now you go solve this, you will get your answer. Clear everybody? So how much you get approximately here? 2 into 36 into 3.1 into 9 into 10 to the power minus 5. So something approximately 0.2 or 0.02, something like that will come here, and then you can find out the exact value. Okay, so let's move on to the next question, but final equation will be this. Clear everybody? Now an inductor of self-inductance, okay, so self-inductance is 1 Henry, okay, and resistance is 100 pi ohms, okay, and VRMS, whenever they mention voltage in the question, guys, whenever they mention voltage in the question, that is always RMS value, okay. So 100 pi volt is the RMS value, remember this in the question. Now let's come to the frequency, which is how much? 50 hertz. So what is omega? Omega will be 2 pi f, which is 100 pi per second, okay. This will be how much? 100 pi seconds. Now once we know this data, we have to find out XL here, which will be omega L. So it will be 100 pi into 1, making it 100 pi ohms. Okay, this is XL. Now we want to find out the maximum current in the circuit. Okay, yes, the answer is 1. How do we find out the maximum current in the circuit? We will say that Z would be R square plus XL whole square under root, which will become 100 pi times root 2 ohms. Okay, now what is IRMS? IRMS is VRMS upon Z. So it is 100 pi upon 100 pi root 2 ampere. So IRMS is I naught by root 2, which is 1 by root 2 ampere, and hence I naught becomes 1 ampere in this particular question. So the answer is 1. Satyam got 1, very good. Okay, so many of you have got 1 ampere as your correct answer. The only catch in this question, if you can say, is हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ खास कैच नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है तो यहाँ VRMS की वैल्यू पे जनरली हम इसको 100 पाई वोल्ट को हम V नॉट मान सकते हैं और तब आंसर गड़बड़ आता. ओके, तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है इस क्वेश्चन में, बाकी तो सिंपल है ये. ओके, now let's come to another question. It is also a little calculative, but we can solve it. A cylindrical rod of length 1 meter. So they are saying a cylindrical rod is given. Okay, so this length is 1 meter and its radius is 4 centimeter, right? Mounted vertically if subjected to a shear force of 10 to the power 5 Newton, right? At the top, considering infinitesimally small displacement. अब इसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डेल्टा x बोल देते हैं, और इसको angular displacement will be theta, right? The angular displacement theta of the rod axis from its original position would be. So theta we have to figure out. Achha, this is not small g, this is capital G, which is shear modulus of rigidity, right? Shear modulus of rigidity, Newton per meter square. Okay, now let's start solving this particular question. So what do you say? You say, sir, force per unit area will be G times theta, right? So theta would be F by A G. Did you solve this question, everybody? Okay, 1 by 40 pi Aryan is saying. Okay, so
theta is, what is force here? So force is 10 to the power 5. Area is pi into 4 into 4 into 10 to the power minus 4. Right? Centimeter square. So pi r square. G is how much? 10 to the power 10 into 1 upon 10 to the power 10. Now we need to solve it further to get our answer. Okay, so 10 to the power 5 Newton, pi r square converted into centimeter square converted into meter square. Okay, so this will become, theta will become 10 to the power minus 5, okay, upon pi into 4 into 4. So this will become 0.25 into 0.25 upon pi 10 to the power minus 5. Now 0.25 into 0.25 is how much? This will become 0.0625 upon pi into 10 to the power minus 5. So it approximately is 6.25 upon pi into 10 to the power minus 7. Okay, now 6.25 upon pi is approximately 2. Oops. So it is 2 into 10 to the power minus 7 radians. Clear? So as per the data, this should be the answer. Can you see this? F by A is G into theta. Area that we will take is this. The angular displacement theta is asked. So area will be this pi r square, right? Okay. Then F by A is G theta. Theta will be F by AG. F is given 10 to the power 5. We put the values and after solving this is what we get. Okay. So let's move on to the next question. Okay. This is the last question in physics. After this, I hope mathematics teacher will be available here to discuss your mathematics, or chemistry teacher will be available to discuss chemistry questions. Okay. So let's start with this question. Here there were 4 combinations actually available. So they have said that R1, R2, R3 is 5 ohms and R4 is 10 ohms. So there are 4 resistances available with us. 3 are of equal resistance 5 ohms and 4th one is having 10 ohm. Which of the following combination is the best circuit to get an equivalent resistance of 6 ohms? So there were 4 combinations available, out of which the correct one I will tell you quickly. The correct one was this. There was an option like this also. So this is R1, this is R2, this is R3, this is R4. Okay. So you can simply say, sir, 5, 5, 5 will become 15 here. Okay, 15 ohms total, and this is 10 ohms. So what is this? 1 by 15 plus 1 by 10 will become 1 by 6. This is 1 by R equivalent. Clear everybody? Okay. So I guess these are the questions for physics, and if I receive any other question, I'll definitely come and discuss it with you. But now let's welcome chemistry sir. Suresh sir, please sir discuss the chemistry questions. Hi, sir. How is the physics paper now? Physics paper, I'll say moderate. Not very easy, but it's moderate. So far the questions that we have received are moderate, involving the conceptual understanding of the chapter. Yeah, even chemistry is also today the paper is well balanced. Yes, yes, and the paper is balanced, I can say, and 2-3 concepts have been mixed in a single question. This is really something good happening in the paper. And okay students, so all the best and let's solve chemistry paper. Okay, Thank you. sir. Hi students, welcome to chemistry. Here 2 more questions are there. This is Suresh, faculty of chemistry. How are you all? So how did you do today's examination? How do you feel today's question paper is easy, moderate or difficult? So it's of G history, most difficult? No, Ansh Verma, it is not more difficult, it is well balanced. And look at this question is from chemical kinetics, grade 12. Consider the following graph between the rate constant K and 1 by T. Here, what is the relation between rate constant K and 1 by T? It is the question related to Arrhenius equation. Arrhenius equation is telling you it is going to be K is equal to A exponent EA by RT. This is rate constant K and A is Arrhenius frequency factor,
and EA is activation energy, and R is a gas constant, and T is absolute temperature. And when you take this equation, ln K is equal to ln EA plus minus EA by RT. Now, when you take this is considered to be a ln K, and 1 by T is going to be a straight line with a negative slope, and with an intercept of ln A, and the slope is going to be minus EA by R. So, this is a negative slope. So, how this slope is given here? So, the more steeper is the slope, more is going to be the activation energy, because this value is negative. So, सबसे बड़ा EA3 का ज़्यादा होना. So, EA3 is greater than EA2 is greater than EA1. So, your answer is going to be here EA1. It is going to be EA1. So, option 2 is the correct answer. So, how many of you did correct this question? Even in the various JEE examination from the various sessions this year, in the session 1 and the session 2 in the previous year also, we have a very good number of questions from the chemical kinetics. Dear students, I strongly advise you, don't leave any single topic based on this particular topic even for the further coming sessions. Henam? Yeah, Star Gaming, how are you? So, I think you attend my regular sessions on YouTube, right? Okay, coming to one more thing over here. Next question is all about chemical bonding. ClF3 has 3 possible structures. So, this is one possible structure, this is one possible structure, this is one possible structure. So, you want to say the statement 2 is the structure 3 is the most stable structure due to the least lone pair bond pair repulsions, of course. And many answers are correct. Amesha, yes, of course, right? You say ClF3. This question is related to valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory. So, according to this, chlorine is going to have, it is a halogen, and halogen has 7 electrons in its outer shell, and it is going to be like this, and 1 fluorine, and it is going to form a bond, 1 fluorine, it is going to form a bond, 1 fluorine, it is going to form a bond. So, what I mean to say here, it is going to be bond pairs are 3 and the lone pairs are 2. So, the overall electron geometry is going to be, steric number is going to be 5. So, as it is a steric number is 5, it will be trigonal, bipyramidal, geometry. So, as this is having a trigonal bipyramidal geometry, you are going to see this is a trigonal bipyramidal geometry, this is the one structure is correct, and this is also a trigonal bipyramidal geometry, this is also correct, and this is also a trigonal bipyramidal geometry, this structure is correct. Based on that, I would say statement 1, yes, it is true. There are 3 possible, it said it is possible. There are 3 possible structures. He wanted to say structure 3 is most stable. This is the most stable structure he wanted to say. I don't accept it. Whenever the lone pairs are present, this lone pairs is supposed to occupy the least repulsion area. So, it is going to be the axial way and it is going to be the equatorial way. So, the always lone pair is going to occupy the equatorial position of the trigonal bipyramidal structure. So, therefore, the structure of this molecule is going to be, let us talk about this is a Cl and it is going to be fluorine and it is going to be fluorine, and the lone pairs are going to occupy at the equatorial position of the trigonal bipyramidal structure. So, the overall structure is supposed to be T-shaped. So, this is supposed to be the actual reliable structure for this, but not this. So, I don't accept this statement 2 is correct. So, for this question, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So, I would say here
Option C is the correct answer for this. How many of you did correct answer for this? That's good. Well done. So we'll come back with some more questions. Sir is waiting. Sir, Akshay sir, please. Thank you so much, sir. So, Over to hi you, sir. everyone. We are back again with the math set of questions over here. So, just have a look to the set of questions being given. जल्दी से sum up करते हैं बच्चों ताकि आपका भी time waste ना हो. So, let's have a discussion over the questions being taken from the math. There is a function being defined. Fx is fx minus 2 of f1 by x is equals to this. With the help of this, I'll be able to find the fx value. कैसे निकालूंगा देख लो एक बार. 2 times f1 by x and this is x square plus 5. देखो क्या करना होगा, x की जगह 1 by x रिप्लेस कर दो. As you do so, it will be f of 1 by x 2 times fx and here it is 1 upon x square plus 5. Are you able to understand this? समझ में आया? अच्छा इधर देखो यहाँ -2 है ना, यहाँ पर भी एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं. Let us multiply second equation by 2. 2f1 by x, it will be 4fx. Here it will be 2, 1 upon x square and then plus 5. I hope this is also clear to you. Let's say this is the first equation, guys. This is the second equation. If you add first and second, guys, what will happen? 2f1 by x, 2f1 by x plus minus these two will get cancelled. Here it is minus 3fx. And this is equals to what? X square plus 5 and then 2 by x square and then plus 10. Are you able to understand this? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? चलो अब यहाँ तक अगर क्लैरिटी हो गई है, अगर यहाँ तक क्लैरिटी आपको हो गई है तो बस अब fx तो आ ही गया ना बच्चों. देखो fx क्या आ रहा है, fx आ रहा है -1 by 3. I've taken this -3 to that side. x square आ रहा है, 2 by x square आ रहा है बेटा, and 5 plus 10 करेंगे तो 15 आ रहा है बच्चे. So this is 15. I hope you are able to understand how we got fx. Once you understand this, they ask you to integrate this fx from 1 to 2. बच्चों इंटीग्रेशन कर लोगे ना x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 1 by x स्क्वायर में आप -1 by x कर देना एंड 15 का 15x हो जाएगा. इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट्स लगा देना, 1 to 2 की अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. विल यू बी एबल टू डू दैट? एक बार थम्स अप दे दो. समझ में आया हाउ वी गॉट fx? ठीक है. अगला इन्होंने ना g के लिए कुछ एक रिलेशनशिप दिया हुआ है. लेट्स सी दैट रिलेशनशिप. 2gx, then they have given 3 times g of half, then it is equals to x over here. Okay, and they are asking you to get the value of beta from here. अब बीटा की वैल्यू चाहिए. How will I be able to get that? तो पहले g फंक्शन निकालना होगा ना, क्योंकि बीटा इज बीन इन्वॉल्विंग g फंक्शन. तो g फंक्शन नहीं होगा तब तक बीटा नहीं आएगा. तो g फंक्शन कैसे निकालते हैं? Let's say we are substituting the value of x as half. If I substitute the value of x as half, it will be 2g of half over here. Here I cannot substitute, it is 3g of half already been written. Here it is half. So 2g minus 3g में से अगर आप subtract करेंगे तो -1g रह जाएगा. So -1g of half is equals to half. So we got the value of g of half from here and that is -half. Clear है बच्चों? How we got g of half? -half. If this is clear to you, I'll keep this value over here. G of half is -half. So 2gx, if I keep -half over here guys, यहाँ पर अगर हम -half डाल देंगे तो +3/2 हो जाएगा. Okay, is equals to x. अब gx की वैल्यू निकालना इजी नहीं हो गया आपके लिए? So 2gx will be equals to x minus 3/2. gx value will be equals to half x minus 3/2. So it will be easy. ये gx आ गया. अब gx आ गया तो यहाँ डाल देना बेटा gx को. इंटीग्रेशन करना इजी है ना. x का इंटीग्रेशन x square by 2, 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2. वो भी बहुत इजी होगा. अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, एंड इफ यू गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा यू विल प्लेस हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 9 अल्फा प्लस बीटा. बोलो किसी को भी डाउट है? इज देयर एनीवन हु डिडंट गॉट द आंसर? सर माय ब्रो फेस दिस क्वेश्चन. ओके कृष, दैट्स ग्रेट. ठीक है, सभी को समझ में आया? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर मतलब 11 होना चाहिए. ठीक है, तो अब अल्फा बीटा निकाल लो, इजी सा ही तो है, आराम से नॉर्मल सा इंटीग्रेशन आप करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर. ओके, कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक सीरीज दी हुई है. यू कैन सी हियर 15c1 फिर 1 स्क्वायर दिया हुआ है, 15c2 2 स्क्वायर, 15c3 3 स्क्वायर, 15c 15 15 स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर m, 3 रेज़ टू द पावर n, 15 रेज़ टू द पावर k. ठीक है, आराम से हो जाएगा ये. इसका जनरल टर्म देखो क्या हो रहा है, r स्क्वायर इंटू 15c r इज द जनरल टर्म.
उसका समेशन है वैल्यू ऑफ आर इज टेकन फ्रॉम 1 to 15। आपको लग रहा है पूरी सीक्वेंस को लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक बार चेक करना, आर स्क्वायर इंटू NCR और फिर 1 से लेकर 15, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, आर स्क्वायर इंटू NCR, ठीक है, और समेशन अगर मान लीजिए आपको 1 से लेकर n तक करना है, सो इट विल हैव अ फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, n इंटू n प्लस 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे फॉर्मूला बना, एक बार ये फॉर्मूला डिराइव कर दो, समझाओ सर ये फॉर्मूला कैसे बना। सो आई विल हेल्प यू विद द डेरिवेशन आल्सो, डोंट वरी। देखो आर स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो, r माइनस 1 प्लस 1 इंटू आर इंटू NCR, ऐसा कर सकते हैं ना बच्चों, एक बार देख लो, ये समेशन लगा हुआ है। अब हमने क्या करा, r माइनस 1 इंटू आर इंटू NCR और फिर r इंटू NCR, ऐसा ब्रेक डाउन कर दिया, कर सकते हैं बेटा, अलग अलग कर दिया। अब इसका वैल्यू तो डायरेक्टली आपको समेशन पता है, क्या होगा, r की जगह n रिप्लेस करो, 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 हो गया, और इसमें r इंटू NCR है बेटा, सो r इंटू NCR है, तो इसके लिए तो आप बहुत इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब आपके पास देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, so you will just substitute the value of, you will just take n common, you will take 2 raised to the power n minus 2 common, 2 raised to the power n minus 2 common ले लो, ठीक है, और यहाँ पर n minus 1 रह जाएगा और यहाँ पर बेटा 2 रह जाएगा, तो ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 आ गया बेटा। देखो यही फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ये प्रूविंग हो गई इसकी। अब है ना बच्चों, देख लो यहाँ पर आपने वैल्यूज लिख दी, n 15 है, फिर 15 प्लस 1 16 है बेटा, और 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, तो n की वैल्यू 15 माइनस 2 करेंगे तो 13 आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इससे कंपेयर कर लो, ये 5 इंटू 3 है और ये 2 रेज टू द पावर 4 है, 2 रेज टू द पावर 13 है, ये 2 रेज टू द पावर 17 हो गया बच्चे, ठीक है, और ये 5 इंटू 3 है। अब मुझे ऐसे लग रहा है आपको समझ में आ गया है अब क्या करना है हमें, m प्लस n प्लस k बोल रहा है, तो ये 19 आंसर आ रहा है बच्चों। आपको भी यही आ रहा है कि चेक कर लो जल्दी से। अच्छा चैट में देखो किसी ने बोला आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा कृष्ण ने भी बता दिया, कृष्ण ने ये वाला स्टेप में यहाँ तक बताया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कृष्ण यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। I hope you all are able to understand how we have attempted this question. Once you are able to understand this question, let's move to the next question. A line passing through a point A minus 2 comma 0 touches the parabola at the point B in the first quadrant. ये parabola देखो कैसा बनेगा, this parabola will have the vertex 2 comma 0 and this will be a parabola, and there is a point A having a coordinate minus 2 comma 0. यहाँ से ये एक लाइन जा रही है which is acting as a tangent to parabola. ओके चलो ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे ये अगर आपको y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ये एक फॉर्मूला लिखते हैं ना हम टेंजेंट का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आता है आपको लिखना, डू यू नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो a की वैल्यू है ना बच्चे इसमें 1/4 है, ठीक है, तो इसके अंदर है ना आपने -2,0 सेटिस्फाई करा दिया, -2,0 सेटिस्फाई करा दिया। सो फ्रॉम हेयर गाइज आपके पास में वैल्यू आ जाएगी स्लोप की, स्लोप ऑफ टैंजेंट। सो 16 m स्क्वायर विल बी 1, m स्क्वायर विल बी 1/16। देखो इस पॉइंट से दो टैंजेंट्स निकल सकती है, एक इधर एक इधर, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में विद अ पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप आ गया 1/4 बच्चे। अब स्लोप 1/4 आ गया तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखना बहुत इजी हो गया हमारे लिए, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। अब इस इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को तुम पैराबोला से सॉल्व कर लेना, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। वैसे एक डायरेक्ट भी है, a बाय m स्क्वायर को ओवर 2a बाय m, तो इससे ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4, बिकॉज इफ यू कीप x वैल्यू 6 हेयर, y वैल्यू विल बी 4 और 2, ठीक है, y वैल्यू विल बी 2। चलो बहुत बढ़िया, 6,2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आपसे कौन सा एरिया मांग रहा है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन ए बी, पैराबोला p एंड द एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया मांग रहा है आपसे। बच्चों अब ये एरिया कैसे निकलेगा? तो आप ट्राइंगल में से पैराबोला का एरिया माइनस कर दिए। ट्राइंगल क्या है? हाफ इंटू बेस, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 8, पूरा ये 8 है, और हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 2,
उसमें से ये पैराबोला का एरिया माइनस कर दीजिए। पैराबोला का अंडर एरिया कितना है? 2 से लेकर 6, 2 से लेकर 6, ऑल राइट। और पैराबोला की इक्वेशन कितनी है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 dx। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अब देखो बहुत इजी है इंटीग्रेशन करना। x माइनस 2 रेज टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 और 2 से 6। 2 डालने का तो सेंस नहीं है, 0 हो जाएगा। 6 डाल दो। 4 का अगर आप 4 रेज टू द पावर 3/2 करोगे तो 4 को 2 स्क्वायर लिख देना, 2 से 2 कट जाएगा तो 8/3/2 आ जाएगा। मतलब ये जो रिजल्ट है वो 8/3/2 आ जाएगा। 8 में से 8/3/2 मतलब 16/3। 8 में से 16/3 सबट्रैक्ट कर देना बेटा, 8/3 आ रहा है। मतलब एरिया जो आ रहा है इसका 8/3 आ रहा है। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग दिस 8/3? टेल मी यस और नो। चलो बहुत बढ़िया। वन ऑफ द स्टूडेंट जयदेव ने 8/3 भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया जयदेव। चलो आई होप जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको सभी को समझ में आ गए हैं और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन एंड अगले जेई मेंस के सेशन पे मिलते रहेंगे। मंडे को फिर से एग्जाम होगा। विल हैव अ डिस्कशन ओवर द सेट ऑफ द क्वेश्चंस गाइस एंड once again thank you so much for putting a lot of trust at Infinity Learn and watching the video throughout, staying in this video throughout. Okay, so once again thank you so much and take care of yourself guys. All the best everyone and be happy always. Okay, so thank you so much, take care and please join the next session also. If you're not part of the Telegram group, please join that group. There we'll be posting the PDF of today's session. Okay, bye everyone, take care. Chalo, bye bye. We are going to end this session now and लीजिए सर।